Welcome, welcome. Hello, can you hear me? Welcome. Can you hear me? Hello, can you hear me? Can you hear me? Is my voice clear? Is my voice clear? चलो start करते हैं. Today I'll discuss many concepts, many questions, not just questions, but related concepts. ओके सर, सब लोग एक बार ओके सर बोलो. लोग एक बार ओके सर बोलो. यस, रेडी 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 रेडी. चलो विल स्टार्ट. जस्ट एक मिनट लीजिए, विल स्टार्ट. ओके सर, एक मिनट लीजिए, विल स्टार्ट. ओके सर. थोड़ा अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ाओ सर, बिकॉज आई कैनॉट इंक्रीज फर्दर. दिस इज द मैक्सिमम. चलो स्टार्ट करते हैं. ये किसका कनेक्शन है रे? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन सर? कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? इज इट फाइन? चलो देखो, वी हैव टेकन क्वेश्चंस, मतलब सारे क्वेश्चंस लिए हैं. जितना पॉसिबल है उतना डिस्कस करूंगा सर, है ना? है ना? चलो. अरे यहाँ पे वॉच भी चाहिए, बिना वॉच से काम नहीं चलता. चलो. गुड आफ्टरनून. Not just questions, but associated concepts also. So I am actually planning one mock test on YouTube, mock test. तो आप सेशन के बाद कमेंट्स में बताओ लेना या नहीं, वो बाद में बताओ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. देखो एक सेकंड, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ सर. What is the power of 2 ton of refrigeration system? The latent heat of ice may be taken as 336, and the specific heat is water is 4.19 sir. देखो सर, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. रेफ्रिजरेशन, अरे वॉल्यूम नहीं आ रहा. हाँ, देखो आप आंसर्स मत देना सर, मैं बताता हूं. 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है the amount of heat that is to be removed from 1 American ton of water. It's not 1000 kg, it is 908 kg of water, to convert it into ice at 0 degree centigrade in 24 hours or 1 day. In 1 day, whatever the amount of heat is to be removed from 1 American ton of water, here American ton का मतलब around 907 908 kg. तो देखो एक सेकंड, you know 907, how much heat? देखो water is available at 0 degree centigrade. You have to convert it into ice at 0 degree centigrade. So what type of heat is to be removed? Latent heat. So what is the latent heat? Roughly 334 or 336. देखो देखो, this is the mass into latent heat. तो ये this is kilo, देखो mass is in kg and this latent heat is kilojoule per kg. तो ये आया in how much time? That is 24 hours. Hours का मतलब 3600 सेकेंड. So many kilojoule per second is kilowatt. तो कितना आ रहा है सर? This you are, अरे यार कैलकुलेटर भी गया देखो, पता नहीं यार कैलकुलेटर कहाँ रखे. कितना आ रहा है सर ये? I'll bring calculator sir. Of course you are not supposed to use calculator.
एक सेकंड, वेयर इज कैलकुलेटर? पता नहीं चल रहा सर। अरे यार, इसका वैल्यू कितना आ रहा है सर? सर अब मैं बात करने के लिए नहीं आया सर, मैकेनिकल के वैकेंसी का। मैं फर्स्ट विल कंप्लीट दिस, देन आई डिस्कस। आते ही नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, जिंदगी आते आते ही नेगेटिव से। मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, कौन लिया? हाउ मच इज दिस सर? 3.52। ये आ रहा है 3.52 और रफली 3.5 किलोवाट, और दिस कैन बी रिटन एज 210 किलो जूल पर मिनट। देखो, दिस इज पर सेकंड, किलोवाट इज किलो जूल पर सेकंड। इन 1 second इट इज 3.5, इन 1 minute into 60, ये आया सर। 1 ton of refrigeration, please note down that ton of refrigeration is not the unit of mass, it is the heat transfer rate। अगर वो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बताता है, इसका मतलब इन इफ इट इज अ 1 ton कैपेसिटी, देन इन 1 second 3.5 किलो जूल ऑफ हीट इज रिमूव्ड। तो ये आंसर आया 3.5 किलोवाट का। मतलब मैं कॉन्सेप्ट्स देते हुए एक्सप्लेन करूंगा सर। while giving concepts I'll explain, मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे सर। so when it is 1 ton refrigeration, it is in 1 second 3.5 kilojoule of heat is removed। तो अगर वो 2 टन का है तो ये 2 टन बोला है, तो 1 TR is 3.5, 2 का कितना होगा 7। so the answer is 7। so please note down that ton of refrigeration is not the unit of mass, it is heat transfer rate। how much heat is to be removed to produce the cooling effect। ये बात सबको समझ में आई सर? have you understood sir? yes। now let's take this। an air standard Otto cycle operates with a compression ratio of 9। the ambient temperature, मतलब temperature before compression, is 300 Kelvin। if the adiabatic index gamma is 1.5, what is the efficiency? देखो सर, Otto cycle consists of, let me show it on PV diagram। तो देखो, Otto cycle consists of 4 processes: isentropic compression, constant volume heat supply, isentropic expansion, constant volume heat rejection। This is our Otto cycle. And please note on that all clockwise cycles are power producing cycles. So therefore, this is the cycle। So from here there is a heat supplied, and here there is a heat rejection. Okay. This cycle is also known as constant volume cycle, because the supply and rejections are taking place in this, matlab, the nature of the process is same, therefore Otto cycle is also known as constant volume cycle। okay, यहाँ पे और एक भी पूछ सकता है सर, what is mean effective pressure? mean effective pressure is nothing but net work by swept volume। तो ये नहीं पूछा है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है सर। नाउ you know very well these two are reversible adiabatic, so no heat transfer। whatever heat transfer is taking place, it is in this। देखो sir, sometimes he may be asking, in Otto cycle the heat supplied is so and so, the heat rejection is so and so, what is the network? Network is equal to net heat also। so in these two processes there is no heat transfer, whatever the heat transfer is taking place वो सिर्फ इसमें और इसमें हो रहा है। therefore supply minus rejection is the network। is it okay sir? बोलो सर। देखो, now efficiency, this is also known as air standard efficiency or ideal efficiency, 1 minus 1 by r power gamma minus 1। ठीक है सर। तो efficiency is 1 minus 1 by, ये याद रखना सर, this is the equation of efficiency of Otto cycle। can you tell me the efficiency of diesel cycle? देखो, diesel cycle will be something like this। the only difference in Otto and diesel cycle is in the nature of heat supply। So in both the cases, heat rejection is taking place at constant volume, but supply in Otto is constant volume, and in diesel it is constant pressure। तो क्या आप इसमें दो चीजें आते हैं सर? देखो, the compression ratio is volume before compression to the volume after compression। there is one more term known as cutoff ratio। this is cutoff ratio। what is cutoff ratio? It is volume after heat addition to the volume before heat addition। this is cutoff ratio। this is cutoff ratio। ठीक है सर। और एक बात बता रहा हूं सर, the efficiency increases। सर నేను క్లాస్ లో ఉన్నా సార్। ఏం సార్? అదే అదే చెప్పిన, నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన సార్, మా కంప్లైంట్ ఇచ్చి నెల అయింది। సరే సరే, నేను క్లాస్లో ఉన్నా, తర్వాత మాట్లాడతాను సార్। మంచిది।
అవునవునవును. అదే సార్. నేను వీళ్ళ కార్పొరేటర్‌కు ఒక నెల ముందు కంప్లెయింట్ చేసినా నేను. రైట్. 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 ఓకే. 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 లుక్ ఎట్ देखो now uh, efficiency of a diesel cycle is given by 1 minus 1 by r power gamma minus 1 into rc power gamma minus 1 by gamma into rc minus 1. Is this correct, sir? Is this correct? Is it okay? मित्रों बोलो, इज इट ओके? ये डीजल साइकिल का है सर. आई थिंक दिस इज करेक्ट ना. दिस इज डीजल साइकिल. ये सही है सर. याद रख लेना सर. नाउ लेट्स डू इट. R. What is the compression ratio? 9. Gamma is 1.5 minus 1. तो ये होगा आपका 1 minus 1 by R is 9. 1.5 minus 1 is 0.5. So therefore 1 minus 1 by, what is 9 power 1 by 2? It is 3. So 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3. 0.66, matlab 66.66 percentage is the efficiency. Is it clear, sir? Yes. Next question. देखो, Mollier diagram. Who was the first one to give the name of enthalpy? Mollier. So Mollier diagram, it will be HS diagram, which we will be using in power plant. मतलब power plant steam Rankine cycle, steam power plants में use करते हैं sir. So therefore, HS diagram is a Mollier diagram. Enthalpy entropy diagram is a Mollier diagram. Is it clear, sir? चलो, okay. अरे यार, no one is responding. चलो, ये देखो. Real gases behave as an ideal gas. Real gas behave as an ideal gas. कब सर? ध्यान से सुनो. At low pressures, at low pressures and high temperature, at low pressure and high temperature, real gases tend towards ideal gas. So means याद रखना, there is in ideal gas there are no intermolecular forces. Is it clear, sir? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. In ideal gas there are no intermolecular forces. I'm not saying wall forces. अंदर molecules के बीच में. So therefore now the real gas behaves as an ideal gas when the pressure is low. इसीलिए मैं बता रहा हूं सर. मुझे बताइए, let us discuss Rankine cycle. Let us discuss Rankine cycle. Rankine cycle में boiler pressure will be very very high. Boiler pressure is very very high. So it is about 200 bar, 210 bar. So can I use ideal gas equation for superheated vapor in Rankine cycle? No, sir. Because in Rankine cycle, the boiler, matlab, the क्या होता है? The pressure at the inlet to the turbine is so high, even though it is in superheated region, I cannot apply ideal gas equation because the pressure is high. But what about vapor compression system? In vapor compression system, the pressure is low. Therefore, in vapor compression system, as pressures are low, you can apply ideal gas equation in vapor compression cycle. Is it clear? बोलो सर से. डोंट जस्ट रीड द सब्जेक्ट. समझ में आ रहा है सर? ठीक है, ये करो, ये करो. कम ऑन, आंसर दीजिए सर. A stainless steel rod of diameter 12 and length 2.5 is kept on a frictionless surface and heated. What is the thermal stress in the rod? Anyone in the class? बिल्कुल यूज कर सकते हैं ऋतिक. ऋतिक बिल्कुल. बिल्कुल. So it is kept on the table. देखो, it is kept on a frictionless surface. मतलब on the table, on the frictionless surface, the the rod is kept and heated. Is there any constraint, sir? Stresses are developed only when the material is constrained, only when the expansion or contraction is prevented. Suppose you keep it and heat it.
It is free to expand on all sides, free to expand. So therefore, no stresses are developed. Even though there is a strain, what is free expansion, sir? L alpha delta T is the free expansion. This is the free expansion, the change in length. Okay. There is a strain. There is a strain, but there is no stress because it is free to expand. Suppose now I keep this in two walls. दोनों walls के बीच में रखूंगा. Now it is not free to expand. So therefore, this stresses are developed. So इस case में it is free to expand. The stress developed is zero. Is it okay, sir? फटाफट कर लेंगे सर. मैं एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं सर आपको. तो फ्री एक्सपेंशन इज एल अल्फा डेल्टा टी. इज इट ओके? राइट. चलिए ये करो. The radius of the Mohr circle is numerically equal to, देखो सर, suppose I draw a Mohr circle. क्या ये यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे टाउ है. क्या ये Mohr circle, 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 क्या ये सारे Mohr circles करेक्ट है या गलत है सर? अरे मैं क्वेश्चन पूछो, आंसर दीजिए सर. इट डिपेंड्स अभिमन्यु. अगर आप पूरा एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर रहे, स्ट्रेन विल बी जीरो. सो ये सारे मोर सर्कल्स आर गलत बिकॉज द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल विल लाई on x-axis. And what is the radius of Mohr circle, sir? It is under root of sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau xy का whole square. This is the one. So क्या आप ये इसको बता सकते? This is the maximum shear stress, sir. ये maximum shear stress है, sir. So the radius of Mohr circle is the maximum shear stress and the center of Mohr circle, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत. It can lie only on x-axis. Is it okay? मित्रों, मित्रों, so पूछ सकता सर. ओके, समझ में आया? बहुत बढ़िया सर. ये करो. In casting process, the horizontal channel through which the molten metal flows from pouring basin to the mold cavity. Let this be the pouring basin. अरे मित्रों, आ रहा है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं सर. अब कहां पे स्टार्ट कर रहा हूं ये नहीं बताऊंगा, बट आई एम स्टार्टिंग. देखो, देखो सर, मित्रों, मित्रों, देखो, मित्रों, 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 दोस्तों, 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 दोस्तों. चलो यहाँ पे राइजर रखेंगे, ठीक है. ये पोरिंग बेसिन है. पोरिंग बेसिन से मोल्टन मेटल जा रहा है. इसको क्या बोलेंगे सर? व्हाट इज दिस नोन एज? बोलो, बोलो, बोलो. इट इज द रनर. दिस इज द रनर. पूरा भरने के बाद ऊपर जो आता है, इट इज द राइजर. तो इट इज द रनर. ठीक है सर जी? ओके सर, ओके सर. ये वाला करो. कम ऑन, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट सर. The stiffness of the material. Actually, what is Young's modulus representing? What is Young's modulus representing? It is actually representing the stiffness. It is actually representing the stiffness. Very good. He is asking specific stiffness. अब देखो मटेरियल स्टिफर है. देखो यंग्स मॉडुलस का फिजिकल मीनिंग क्या है सर? द फिजिकल मीनिंग ऑफ यंग्स मॉडुलस इज इट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस टू actual deformation. When there is an actual load, what is the resistance? If the resistance is more to the deformation will be less. Similarly, what is bulk modulus representing? It is representing resistance to the volumetric deformation. If the bulk modulus is more, the volumetric deformation will be less. Then what is the rigidity or shear modulus? It shows the resistance under shear deformation. So if समझ में आ रहा है? Beautiful. देखो, is it okay? Right. So therefore, the specific stiffness is nothing but Young's modulus to its density. Young's modulus to density, we call it as the specific stiffness. Specific stiffness. Okay. Chalo. Now you know the relationship. E is equal to 2g into 1 plus nu, and E is equal to 3k
इंटू 1 - 2 न्यू। क्या ये रिलेशन ये सही है सर? मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। एक बार क्रॉस चेक कीजिए सर, यू प्लीज क्रॉस चेक, इज इट करेक्ट? ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो। I have derived this in class. Beautifully, I have derived this. This is the most popular question, sir. This is the most popular question, sir. I have derived. कितना beautifully derive किया सर क्लास में। हाँ ये सॉरी, ये derive नहीं है, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट वाला स्प्रिंग का derive किया था, ये वाला नहीं सर, ये वाला नहीं। देखो देखो, which of the following is used for transmitting non-parallel non-intersecting, non-parallel non-intersecting? Spur gears and helical gears are used for connecting two parallel shafts. Bevel gears are used for connecting intersecting shaft. And worm gear, it is used for high speed reduction, even hundreds. And they are used for connecting non-parallel and non-intersecting. What about hypoid gears, sir? Hypoid gears are also used for connecting non-parallel, non-intersecting. इसी की तरह, तो इसका आंसर है worm gear. And one more question, most popular question is, worm gears are used for high speed reduction. High speed reduction. ठीक है, चलो ये पढ़ो। The diagram she is showing. Okay, okay, okay. अच्छा, डायग्राम बताओ। Can you see the diagram, sir? आराम से कर लेंगे सर, नीटली कर लेंगे सर, रिफ्रेश हो जाएंगे हम लोग। देखो, सुनो केयरफुली, ये वाला, you know very well which one is the most conservative means safest theory under dynamic loading? Rack and pinion is a, देखो, you know, rack is a gear of infinite diameter, मतलब it converts rotary motion into translatory linear motion, समझ गए? सो तो क्या मैं इसको, देखो, ये जो वन है, वन इज दिस लाइन, ये वाला लाइन, इट इज सोडरबर्ग। एक्सलेंट सर। व्हाट अबाउट दिस लाइन सर, सेकंड वाला, दिस इज गुडमैन। एंड द थर्ड पैराबोला, गर्बर पैराबोला बोलते हैं इसको, दिस इज गर्बर। And these, and the most safest or the conservative theories, if a point is falling in this region, it will fall in the entire, because Soderbergh is the subset of Goodman and Gerber. Soderbergh is a subset of Goodman and Gerber. So देखो, one is Soderbergh, two is Goodman, three is Gerber. देखो, one is Soderbergh, two is the option A correct, sir? Yes or no, sir? अरे यार, आप लोग आंसर नहीं दे रहे, you people are not giving. And you tell me, under static loading, under static loading, which one is the most conservative? स्टैटिक में कौन सा मोस्ट कंजर्वेटिव है? अरे ये तो डायनेमिक लोडिंग के लिए है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ट्रेस्का और गेस्ट थ्योरी, करेक्ट? इट इज द मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी। सर सब भूल गए सर, एवरीवन फॉरगॉट, सब लोग भूल गए सर, एवरीवन फॉरगॉट सर। ये करो, which of the following is not suitable for action loads? My dear students, देखो एक बार, डीप ग्रूव, एक्चुअली ये ग्रूव होने के कारण थोड़ा बहुत एक्शन लोड लेता है सर, डीप ग्रूव होने के कारण थोड़ा बहुत एक्शन लोड लेता है। एंगुलर डीप मतलब थोड़ा डीप ग्रूव का मतलब थोड़ा बहुत डेप्थ, थोड़ा डेप्थ होने के कारण थोड़ा सपोर्ट मिलता है। आई रिपीट सर, ये देखो, देखो एक डीप ग्रूव है तो यहाँ पे कुछ हल्का सा सपोर्ट मिलता है सर एक्शन लोड के लिए। एंड देखो एंगुलर कांटेक्ट, यस, इट इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे एक एंगुलर कांटेक्ट, यहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है।
एंड टेपर्ड रोलर बेरिंग में तो डेफिनेटली टेपर्ड रोलिंग इट इज सुटेबल फॉर बोथ एक्सल, इसमें एक कंपोनेंट आता है एक्सल एंड रेडियल, ये रेडियल और एक्सल आता है, लेकिन स्ट्रेट सिलिंड्रिकल में यू नो ओनली रेडियल लोड लेता है, तो एक्सल लोड इट विल नॉट टेक, तो स्ट्रेट सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग दे डू नॉट टेक एनी एक्सल लोड, इज इट ओके सर? Say something, Baba. Say something, Baba. Baba, Baba, bolo. Which of the following is not casting defect? Not bola hai. Blowhole is a casting defect. Colshet is a casting defect. Hot tear is a casting defect. Spatter is a welding defect. It is a welding defect. तो ये this is the answer. तो ये आंसर नहीं है रे बाबा. ठीक है. Now ये बताओ सर. मजा मजा. मजा 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 मजा. अरे आज चेस चिप्स नहीं है. वेर इज चेस चिप्स? थैंक यू बेटा, तू तो जिंदगी धन्य कर दिया मेरा. देखो इस क्वेश्चन को करेंगे. द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 1600 यूनिट्स पर मंथ. It is carried out at 75% of the rating. The maximum production capacity is 16, but it is carried out at 75% capacity. So, आप बताइए, how many quantity are you producing, sir? Its maximum is 1600 per month, but it is running only 75%, sir. 75%. So, is it correct, sir? तो कितना आ रहा है सर ये? 3 by 4, 3 by 4, 4 into 3, 1200. So you are producing these many quantities. Correct, sir. Now देखो, what is the profit, monthly profit? कैसा करेंगे सर? Fixed cost plus total variable cost plus profit is equal to selling cost. क्या ये इक्वेशन सही है सर? क्या ये इक्वेशन सही है सर? मित्रों बोलो. Yes. तो यहां पे बट वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्यू इनटू वेरिएबल कॉस्ट प्लस, देखो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट क्यू है, एक यूनिट का क्यू है, तो ये सेलिंग कॉस्ट, व्हाट इज द सेलिंग कॉस्ट? क्यू इनटू सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये टोटल सेलिंग कॉस्ट है, एक यूनिट का दिया है सर. सो इफ वन यूनिट का इतना है, सो मेनी क्वांटिटीज का इतना होगा सर. ये समझ में आ रहा है सर? यहां पे लिखेंगे सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट पर ये. इज इट क्लियर? अरे यार, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट शुड बी दिस. व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? 80,000 plus Q quantity produced is 1200. And what is the variable cost, sir? The variable cost is 350 plus profit is equal to Q is 1200 and the selling cost is, the selling price kitna hai sir? 600. So anyone, what is the profit, sir? Kitna aa raha hai, sir? What is the profit? Say something, say something. Just chips, 1 lakh. So profit is, ठीक है, ठीक है, right. ये करो. Input activity, the optimistic time is 6 minutes. The most likely is 9 minutes. And the pessimistic is 16 minutes. The expected time of the activity is, इधर देखो सर, the expected time input, it is based on 3 sigma distribution, plus 3 sigma minus 3 sigma. So total कितना होगा सर? 6. That's why we divide with 6. In class I explained very clearly why we take 6. सब बताया था. तो मोस्ट लाइकली को हम वेटेज देंगे 4, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक को हम इक्वल वेटेज देंगे. द ऑप्टिमिस्टिक को वेटेज इज 1, पेसिम आउट ऑफ 6 1 is given to optimistic, 1 is given to pessimistic and 4 is given to most likely. So the expected time is given by, the optimistic is 6 plus 4 times, most likely is 9 plus pessimistic is 16 by 6. So how much is this? This is all minutes, sir. 9 4 36,
36 plus 36 is 52, तो ये होगा 58. This is 58 by 60, so many minute. But this can be written as 58 by 6. Minute को हम लिखेंगे 60 second. So this will be equal to 580 second. 580 second. Is it clear, sir? What is the answer? 580. Yes. आ गया सर? Say something. Say something. हाँ जी सर. ये करो. आंसर दीजिए सर. नवेद इज सिंसियर. जस्ट चिप्स नवेद दोनों सिंसियर है सर. कम ऑन मेक इट फास्ट. सर इसरो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं डोंट एक्सपेक्ट टू डू ऑल क्वेश्चंस. जो आते हैं सिंसियरली करके जाओ बस. हाँ 15. ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय रूट के बाई एम. कॉमन सेंस देखना सर. सपोज आई पुश इट डाउन, ये कंप्रेस होगा और ये एक्सपैंड होगा. When it is expanding, it will try to come back. जब कंप्रेस ये भी मतलब both are in the same direction. मतलब इसका stiffness add हो रहा है सर. So therefore it is nothing but parallel connection. तो parallel दोबारा बता रहा हूं सर. जब आप इसको नीचे कंप्रेस कर रहे हैं, the spring will try to come back. तो नीचे वाले का फोर्स ऊपर आएगा. चलो ठीक है. अगर इसको ये एक्सपैंड हो रहा है वापस आने की कोशिश करेगा तो ये टोटल फोर्स क्या होगा? के टू के एक्स प्लस के एक्स. टू के एक्स मतलब added up means it is parallel. So what is the effective stiffness for this? The effective stiffness is k plus k, that is 2k. So therefore omega is equal to 2 pi natural frequency omega is equal to 2 pi f. So अगर आपको natural frequency चाहिए 1 by 2 pi into omega. So the natural frequency is 1 by 2 pi and omega is omega kitna hai sir? 2k by m. This is the one. So the answer is 2k by m. Is it correct? Yes. बोलो सर जी. हाँ. ये करो. Come on, make it fast. Come on, come on. Make it fast. Let's not waste time, sir. Let's not waste time, sir. 13th question. क्या प्रॉब्लम है सर? बोलो. Someone said, sir, please check 13th question. कोई प्रॉब्लम है सर? Any problem, sir? 13th में क्या दिक्कत है सर? 2.2 lakh. अरे 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 अरे. I'm really sorry. He is absolutely correct. He is absolutely correct. Absolutely correct. He is absolutely correct. अगर 600 है तो you will get if it is 600 it should be 2.2. Excellent सर. मतलब सारे लोग रटे सो आंसर दे रहे हैं. मतलब बहुत मुश्किल है सर आपको. Very sad sir. Very sad. Very sad. I am not happy with you people. Who is who has highlighted that? अखिल ना. कौन बोला? अखिल बोला. कौन बोला? सर प्लीज चेक 13 क्वेश्चन. अखिल. अखिल बिल्कुल सही है सर. बिल्कुल सही है. कोई प्रॉब्लम हो रहा है सर? अरे यार क्या हो रहा है? लैग हो रहा है कुछ? कोई लैग भी नहीं हो रहा ना? अरे यार इज एवरीथिंग फाइन या कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ मुझे तो नहीं दिख रहा. आप सही दिख रहा. इज एवरीथिंग फाइन सर? अभी सही है? नो लैग. ऑल गुड. थैंक यू. थैंक यू. हाँ
So you tell me, with 500, what is the profit, sir? If the selling price is 500, what is the profit, sir? 1 lakh. Okay. हाँ, ये करो. A damped spring mass system is forced to oscillate at t equal to 0 by the application of impulse. Which of the following is true? ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्तों. The damped frequency is given by the natural frequency into under root of 1 minus zeta square. ठीक है सर. So because of damping, what will happen to the amplitude of successive vibrations? Cool. If the damping ratio is between 0 to 1, the system will show no oscillations. तो बताएगा सर. Oscillations तो बताएगा. ये गलत है. If the damping ratio is between 0 to 1, the system will eventually come to rest. बिल्कुल correct है सर. Whenever there is a damping, the vibrations will damp out and system will come to rest. Is it okay, sir? Is it correct, sir? Is it correct? Yes. Yes. ये करो. ये तो simple सा है, sir. The property of the material which represents the maximum strain energy that it can absorb before fracture. देखो, he is asking, ये fracture है, sir. And what is this known as, sir? It is toughness. Or if it is a stress strain diagram, we call it as toughness. मतलब energy absorbed per unit volume, and that we call it as modulus of toughness. Suppose the same, ये बहुत regularly आ रहे sir. These questions are coming very regularly. This is answer तो हो गया. Now suppose देखो sir, to elastic limit, what is this known as, sir? To elastic limit, what is this known as, sir? Make it fast, make it fast. Yes, it is proof resilience. Proof resilience or modulus of resilience. Correct. Up to elastic limit. ठीक है. Give the answer. Come on, give the answer. A Carnot refrigerator works between 300 and 270 with different working fluids. Which of the following will give better COP? मेरे प्यारे दोस्तों, reversible devices are always independent of working fluid, whether it is a reversible engine or reversible refrigerator. Carnot refrigerator is a reversible refrigerator. So reversible device, reversible cycles are independent of working fluid. तो और ये बताया था आपको मैं, whether it is an engine or work absorbing, जो भी है. So whether it works on chlorofluorocarbons, whether it works on R22, R32, all because, but one thing is same. What is same? See, it is temperature limits. The lower temperature is 270 Kelvin and the higher temperature is 300 Kelvin. So what will be the COP, sir? आप जानते हैं, it is T lower by T higher minus T lower. T lower is 270 and T higher is 300 minus 270. तो कितना आ रहा है सर ये? What is the value, sir? It is 270 by, ये तो 30 है, so this is 9. Of course, ये पूछा नहीं. He has not asked, but I am doing. Is it okay? रुद्र प्रकाश, सेम होगा. Very good. ये कर रो. Answer. Which of the following represents Stirling cycle? बताओ सर, Stirling cycle, वो तो clockwise होगा, power producing. बताओ सर, in Stirling cycles, हाँ, तो what are the different processes? Of course, I know there are 4 processes. Of course, I know there are 4. What are those?
In Stirling cycle, we have two isochoric and two isothermal. ठीक है सर, आप बताइए सर, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, isothermal expansion. You know, isothermal is a rectangular hyperbole. Yes, it is a rectangular. Constant volume heat rejection, isothermal compression. Yes, this is representing Stirling cycle on PV diagram. PV diagram पे there is no constant pressure in Stirling. गलत है. Temperature entropy पे आप बताइए सर. Yes, these two are satisfying constant volume. बट ये isentropic है सर. बट इन Stirling cycle there is no isentropic. ये गलत है सर. ये वाला देखो. हाँ, you know very well on TS diagram, what is the slope of constant volume, sir? T by CV. What is the slope of constant pressure? T by CP. Which slope is more constant? As CV is less than CP, the constant volume slope is more. अगर आप diagram show कर रहे हैं, this is constant volume and this is constant pressure. चलो ठीक है, तो ये constant volume मान लीजिए, ठीक है सर. And then isothermal, constant volume isothermal, and then constant volume, then isothermal. So therefore, देखो एक बार, isothermal constant volume. So therefore, uh, 1 and 4 are representing Stirling cycle. Is it okay, मेरे प्यारे दोस्तों? Now I have a question, sir. I have a question. What is Ericsson cycle? What is Ericsson cycle? बताओ सर. Ericsson cycle, ध्यान से सुनो सर. Brayton cycle with large numbers of uh, reheating and intercooling will give me Ericsson cycle. ये क्वेश्चन आ सकता सर. Brayton cycle, which is used in gas turbine cycles, Brayton cycle with large number of reheat and large number of intercooling will reduce to Ericsson cycle. So Ericsson cycle has four processes: two constant pressure, two constant temperature. याद रख लेना. Is it okay, sir? Two constant pressure, टू कांस्टेंट टेम्परेचर. एरिक्सन की बात कर रहे हैं, तो स्टर्लिंग वीटी, टू कांस्टेंट वॉल्यूम, टू कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है सर जी, ये करो. रैपिड मींस सडन and sharp changes in fluid properties. Sharp means sudden changes in a small region is known as shock waves. So shock waves will occur, you will be shocked, sir. आप पता है माइक्रो थिकनेस में होता है सर, माइक्रो थिकनेस में होता है. मतलब ये ऐसा फॉर्म होगा कि ये अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम सडन चेंजेस इन प्रॉपर्टीज. कभी भी याद रखना, शॉक, आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली इन कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, शॉक वेव फॉर्म होने के लिए initially the flow should be supersonic. So whenever the initial flow is subsonic, there is no question of shock waves. Normal shock waves form होगा ही नहीं जब initially supersonic नहीं होगा. So if it is a supersonic, that is, if the Mach number is greater than 1, then only the shock waves are formed. Otherwise, no. Is it okay, sir? मिलेगा सर, देंगे, पीडीएफ मिलेगा. ठीक है, चलो फिर ये क्वेश्चन समझ में आया सर? ये करो. Answers. Yes, what happens in cavitation? Very good, sir. Cavitation में होता क्या है ना? It is a low pressure phenomenon. Whenever the pressure at any point is lower than the vapor pressure, vapor pressure से कम होता है. Whenever the liquid pressure is lower than vapor pressure, vapor pockets are formed. And if they are carried to a region of high pressure, they collapse, leading to huge deformation. मतलब like erosion form होता है सर. Okay? ये देखो. अरे यार, आपको चोकिंग चाहिए.
fixed mass flow rate irrespective of the pressure ratio. For example, देखो, तो यहां पे I'll take suppose pressure ratio mass. देखो, mass flow rate is constant even though the pressure ratio is changing. Fixed mass flow rate irrespective of the pressure ratio. It is known as क्या बोलते हैं मित्रों, choked flow. Choked flow is mass flow rate doesn't change even though the pressure ratio is changing. It is because I had explained very clearly in compressible flow में ये बहुत बड़ा concept है sir. Is it okay? Right. ये करो. What is the change in entropy when water is vaporized at 100 degrees? So temperature should be strictly kept in Kelvin. 273 plus 100, तो ये होगा आपका 373 Kelvin. ठीक है सर जी. And the latent heat of vaporization is 2238 किलोजूल पर केजी. ठीक है सर. नो क्या आप बता सकते व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज? एंट्रोपी चेंज इज ड्यूरिंग फेस चेंज व्हिच इज Sg minus Sf is latent heat by temperature. Latent heat by temperature. ठीक है. So the latent heat is 2238 and the temperature is 373. तो कितना होगा सर ये? Is it 6? Is it 6? Yes. Should be correct, na? ये करो. Please answer. Please answer. Examine the following statement. Work is a high grade energy. It is correct statement. Heat is a low grade energy. Heat is disorganized form of energy. Work is a high grade energy. Work is organized form of energy. ठीक है. It is possible for a heat engine to produce work in a cycle. Read the question statement. It is possible for a heat engine. Everyone knows heat engine operates on a cycle. To produce work in a cycle by exchanging heat with bodies at the same temperature. क्या सिंगल टेम्परेचर पे वर्क प्रोड्यूस होगा सर साइकिल में? क्या सिंगल टेम्परेचर पे वर्क प्रोड्यूस होगा सर? मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, it is possible for a heat engine to produce work in a cycle by exchanging heat with bodies at the same temperature. एक टेम्परेचर पे होगा सर. This is absolutely wrong. Second statement is wrong. Statement 2 and galat. All are correct. Galat. All are wrong. Galat. Because already first statement is correct. Okay. It is, देखो 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 देखो, please see the statement. It is impossible बोला है. It is impossible. It is impossible to construct a device which operates in a cycle and produce no effect other than transfer of heat from. Yes, it is a clausius statement. It is impossible to develop a device which transfers heat from low temperature to higher temperature. देखो देखो, which will produce no other effect. No other effect means no work. Without work, is it possible to transfer heat from lower to higher temperature? Impossible. वो भी बोल रहा है it is impossible. हम भी बोल रहे हैं impossible. Clausius uncle भी बोल रहा है impossible. ये statement सही statement है सर. So 1 and 3 are correct statements. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? मित्रों, एक सेकंड, एक मैसेज भेजूंगा सर, एक इमरजेंसी आया. 1 सेकंड प्लीज, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे. जस्ट एक मिनट दीजिए, एक इमरजेंसी आया तो एक मैसेज भेज दूंगा मैं. यस मित्रों, खुश हो कि नहीं? नाउ आई एम प्लानिंग वन ग्रैंड टेस्ट फ्रॉम माय साइड. मतलब प्लान कर रहा हूं सर कि सारे नए क्वेश्चंस. ओके, अगर आपको चाहिए तो बता देना कमेंट्स में.
चलो ये क्वेश्चन भी बन गया सर. वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम सर. वी आर नॉट एट ऑल वेस्टिंग टाइम सर. देखो, just in 45 minutes we have covered 22 questions. Zabardast chal raha hai sir. The moment of the resultant of the concurrent forces with respect to a center in their plane is equal to algebraic sum of the moments. कौन सा statement है सर ये? Varignon's theorem states that the resultant moment at any point is equal to sum of the components of moments about that same point. So therefore it is a Varignon's theorem. Varignon's theorem. Okay sir. Okay sir. Okay. ये कर. Come on, come on. संचिता, शशि कुमार, प्रशांत, नावेद, संकेत, मैकेनिकल वर्ल्ड. थोड़ा पढ़ रहा है तो दिल से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो. देखो, stress strain curve of three types of material is given in the figure below. Please identify correct combination. इधर देखो सर, मुझे लग रहा है ये तो यहीं पे फ्रैक्चर होगा. इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मर गया, इसके बाद कोई नहीं, ये मर गया यहाँ पे. सो देयरफॉर E is brittle. It is showing some strain. Before fracture, it is showing significant strain. तो क्या मैं इसको F को डक्टाइल बोल सकता हूं सर? हाँ जी सर, क्यों नहीं बोलते? देखो यहाँ पे, देखो एक बार, कंटिन्यूस स्ट्रेन मतलब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूस कंटिन्यूस. सो इट इज आइडियल प्लास्टिक. तो बोलो सर, आंसर बोलो. E is brittle, F is ductile, G is plastic. Is the option A correct sir? हाँ हाँ जी सर, ये बोलो. अब ये देखो, ये बोलो. This is linear elastic. This is also linear elastic plastic. Linear elastic with strain hardening. Linear elastic with strain hardening. Yes or no, sirs? Why the material is work hardened or strain hardened? Because of the pileup of dislocations. Because plastic deformation is motion of dislocations. अगर dislocations में hurdle आ गया तो there will be strain hardening. Is it okay, sir? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. मित्रों 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 मित्रों, दोस्तों 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 दोस्तों. मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, विच मैं क्लास में कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया था अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में. मोमेंटम डिफ्यूजिविटी. सो द काइनेमैटिक विस्कोसिटी represents momentum diffusivity. It represents ability of the fluid to resist the momentum rather than transfer. So I explained very clearly. So this represents the momentum diffusivity. Momentum diffusivity. So therefore, it is the kinematic viscosity that is representing momentum diffusivity. Wait, what is the unit of this? देखो, म्यू का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, एंड डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो ये कट गया, मीटर मीटर. सो देयरफॉर इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड. वेरी गुड. There is one more term which has the same units as that of kinematic viscosity: thermal diffusivity. Thermal diffusivity. What is thermal diffusivity? K by rho Cp. K by rho Cp. ये दोनों से पैदा हुआ एक टर्म है, क्या बताइए सर? Based on these two, anyone? बोलो बोलो. Yes, Prandtl number. Prandtl number is nu by alpha. Nu by alpha. What is nu? Mu by rho. And what is alpha? K by rho Cp.
के रो रो कट गया, so therefore mu cp by k, mu cp by k. Is it okay, sir? What is the significance of Prandtl number? यहाँ पे और थोड़ा चीज कर देंगे सर. Prandtl number, it shows the relative magnitudes of hydrodynamic bond layer thickness and thermal bond layer thickness. If the Prandtl number is 1, what is the relationship between hydrodynamic and thermal bond layer? They coincide. They coincide. And Prandtl number is mu Cp by K. बताया था. If the Prandtl number, ये 1 किसके लिए होता है सर? Generally for gases. Generally for gases like air, around 1. So if the Prandtl number is greater than 1, क्या मतलब है सर? किसके लिए greater than 1 होता है सर? Generally for lubricating oils. Lubricating oils. So if Prandtl number is greater than 1, means mu is dominating. So इधर देखो. So अगर हम ऐसा करेंगे, so this will be hydrodynamic and this will be thermal. Because when Prandtl number is greater than 1, the hydrodynamic bond layer will be greater. Is it clear or not clear, sir? Very good. अब ये बताओ, if the Prandtl number is less than 1, उल्टा क्या है? उल्टा इधर देखो. देखो, if the Prandtl number is less than 1, मतलब ये होता है हाइड्रोडायनेमिक और वेलोसिटी बाउंड लेयर और सिंपली डेल्टा, ये होता है थर्मल. थर्मल एग्जांपल दे सकते हैं सर आप? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी. For mercury, the thermal boundary layer thickness is greater than the hydrodynamic. पूछ सकता सर. There is a possibility of this question. देखो हम, we are not just doing question in and around concept भी पढ़ रहे हैं. ताली बोलो एक बार. क्या बच्चे हैं रे, ये बच्चों को. हाँ जी सर. देखो, a beam is subjected to a uniform load WC per unit length. MA, VA, VB are the reactions shown in the figure. The expression of shear force and bending moment is given by, देखो. बोलो मेरे प्यारे दोस्तों. Let us take any section. Let us take any section. तो यहां पे the force is given as VA. Calculate the shear force at any section. तो it moment का तो shear force पे कोई effect नहीं सर. There is a moment of MA. तो what will be the shear force here? It is VA into X clockwise minus, देखो minus क्या होगा सर? So this total length is X. So it is W per unit length. What is the total shear force, sir? For 1 unit it is W. For X it will be WX. ये ऊपर है, ये नीचे है. अगर ऊपर का प्लस है, नीचे का मैं, अरे मैं क्या कर रहा हूं सर? मैं तो पागल हो गया सर. I want the shear force at any X. तो it is VA. चलो VA ऊपर है, ये नीचे है माइनस. या फिर यू कैन फॉलो एनी कन्वेंशन सर. कन्वेंशन के लिए डाउट मत करना सर प्लीज. कन्वेंशन इज योर डिस्क्रिप्शन. सो इट इज VA. VA. तो ये फोर्स कितना होगा सर? फॉर 1 मीटर इट इज W. फॉर X इट विल बी WX. ये नीचे है तो माइनस WCX. क्या ये शेयर फोर्स इक्वेशन करेक्ट है सर? 100%. देखो, ये गलत है, पॉसिबल है, ये गलत है, ये दोनों पॉसिबल है सर. नाउ लेट्स फाइंड आउट द, क्या बोलते हैं, द मोमेंट. लेट अस फाइंड आउट मोमेंट एट एनी सेक्शन. मोमेंट एट एनी सेक्शन. देखो देखो, 1 सेकंड प्लीज मेरे मित्रों. 1 सेकंड रुको जरा, सब्र करो, धक्कमुक्की नहीं लेने का. हाँ डियर, this WA is causing clockwise. This movement, concentrated movement, is also clockwise. So WA into X clockwise plus MA is clockwise. और ये this WX मित्रों, ये WX कहाँ पे ऐड करेगा सर? तो for 1 meter it is, for 1 unit it is WC. For X it will be WCX. So therefore it is WCX. तो ये कहां पे ऐड करेगा सर? सो टोटल इज WCX. ये x/2 पे ऐड करेगा सर, x/2 पे. बट ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए ये माइनस होगा सर. माइनस क्या होगा?
WCX into x by 2. So therefore, WAX plus MA minus WC x square by 2. So therefore, आंसर क्या है सर? मित्रों आंसर क्या है सर? इज डी करेक्ट? बोलो सर जी। हाँ जी। So all of you, are you following, my dear students? If this is clear, I'll proceed, sir. बहुत बढ़िया सर, ये पढ़ो एक बार। Determine the what do we mean by elastic curve? Elastic curve means which shows the variation of deflection along the length. The variation is due to the transverse loading. The elastic curve shows the variation of deflection along the length of the beam. So y as a function of x, that is elastic curve. It is a cantilever beam. ठीक है sir. It's a cantilever beam with क्या बोलते हैं, concentrated moment at the free end. तो कैसे करेंगे सर? I want to draw the elastic curve. तो हो सके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस यू शुड रिमेंबर. तो इसको कैसे करें सर? मैं आपको बताता हूँ सर. एक सेकंड. वरी सर. ठीक है. एम और एम वन जो भी है मेरे प्यारे दोस्तों, देर इज वन इक्वेशन EI d2y by dx square is equal to m. ठीक है सर. So if I take any section as it is a concentrated moment, it will be same throughout the length. So at this section, some random section, what is the bending moment, sir? It will be m only. If you draw a bending moment diagram, it will be a rectangle with a height m. So let me write this as EI d2y by dx square is equal to m. ये m m m ही है सर. अब इसको इंटीग्रेट करो. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, EI dy by dx इंटीग्रेट करो is m x plus some constant c1. गलत है सर ये? सही है. फर्दर यू इंटीग्रेट दिस. लेकिन एक पॉइंट है सर. क्या पॉइंट है? चलो फर्दर यू इंटीग्रेट. EI is constant. What is integral dy? dx इधर ले लेना. Integral dy is y is equal to ये dx इधर ले लेना. mx dx is mx square by 2. How x square by 2? X power n plus 1 by n plus 1 c dx plus c1x integral dx plus c2. ये मेरा इक्वेशन बन गया सर. अब मुझे इलास्टिक कर्व चाहिए. देखो सर एक सेकंड रुको. There are two unknowns, C1 and C2. How can I find unknowns? आप बताओ सर. As this is a fixed end, at the fixed end, you have the elastic curve something like, देखो एक बार. So it is horizontal, so it is y and it is x. So यहाँ पे horizontal है, तो dy by dx is 0. Horizontal का मतलब y, change in y is 0. Slope is 0 here. तो at x is equal to 0. No, x 0 नहीं. x यहाँ से measure करते आ रहा हूँ सर मैं. x यहाँ से measure करते आ रहा हूँ सर. I am measuring x from the free end. So when x is L, x is increasing. So when x is L, my dy by dx is 0. Similarly, at x is equal to L means यहाँ पे x is increasing, इधर से x is increasing. At x is equal to L, what is a deflection? Y is 0. And if I put these two, I get the value of y. So that is elastic curve. अब concept समझ में आया सर आपको? कर लेंगे अब? चलो कर देंगे आपके लिए. देखो dy by dx is 0. कहाँ पे? dy by dx is 0 at x is equal to L. dy by dx is 0. 0 into something is 0. At x is equal to L. So C1 will be equal to minus ml. ठीक है सर. And यहाँ ये EI. What is the value of y, sir? Y is 0.
y 0 कहां पे, at x is equal to L, तो ml square by 2 x is equal to L plus C1, already C1 is known, minus ml C1 is minus ml, but x is equal to L, x is equal to L plus C2। आप बताइए सर, ये जीरो हो गया, तो ml square minus ml square by 2 is C2, तो C2 is equal to ml square by 2। गलत है सर, अरे यार, this is minus ml square, this side ml square, minus ml square, this will be ml square by 2, so C2 is ml square by 2। यहाँ पुट करो सर। अब where do you want the deflection, ये तो इक्वेशन, इलास्टिक कर्व का इक्वेशन ये है सर। ई कहाँ पे लिखूं सर मैं, यहाँ लिख देंगे सर, EIY is equal to mx square by 2 plus C1, what is C1 sir, C1 minus ml, C1, C1 कहाँ गया रे वो, C1x plus C2, खत्म सर। अगर आपको डिफ्लेक्शन x0 पे चाहिए, यहाँ पे x0 पे डिफ्लेक्शन चाहिए, फ्री एंड पे x इज मेजर्ड फ्रॉम हियर, x0 0 x0 0, तो EIY, तो y विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 2 EI, जब x0 है, x0 है एट द फ्री। दिस इज एक्चुअली द इलास्टिक कर्व इक्वेशन सर, ये एक्चुअली इलास्टिक कर्व इक्वेशन है। अब समझ में आया सर सभी को? देखो मेरे प्यारे दोस्त मैकेनिकल वर्ल्ड, बहुत अच्छा बोले सर, सर दिस कैन बी सॉल्व इजीली बाय रिमेंबरिंग द इक्वेशन, बहुत बढ़िया। Suppose some questions are given wherein you, which is not standard, wherein he may be asking you to find out the elastic curve, तब क्या करेंगे? I am always believing in one thing, that is, I always believing in one thing, that is neat conceptual procedure. We must know the procedure, otherwise it will be difficult. If you simply by heart shortcut techniques, if you simply remember formulae without assumptions, it is very dangerous. That's why I gave you very clearly, okay? Okay sir, चलिए बोलो। मित्रों दोस्तों, come on, yes, this is a good question sir। देखो एक बार, the preferred choice of steel for cryogenic applications, what do we mean by cryogenic applications? Cryogenic is nothing but low temperature. At low temperature, material becomes brittle. Material becomes brittle. Therefore, I should use a material which has good ductility. Generally, you know, FCC structures have good ductility, so therefore I prefer austenite, because austenite has not only good strength but also has good ductility. That's why it is used in low temperature applications, which we have studied in material science. Is it okay, sir? हाँ जी सर। वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। come on, देखो, is this equation correct, sir? The damping factor, is this correct or wrong, sir? Is this correct or wrong, sir? मैं तो भूल गया सर, I forgot this. So let's compare this equation with our given equation.
चेक करो, m is equal to 1, c is equal to 4, k is equal to 16. Okay, so therefore मेरे मित्रों, so the damping factor is given by, किसी को आइडिया है सर? c by 2 root km. तो c is 4 by 2 root k कितना है सर? 16 and m is 1. So it is 4 by 2 into 4. So it is 1 by 2, which is 0.5. Anyone got this? Anyone got this? सर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सर आपको, आजकल का दुनिया थोड़ा थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे सर, बिकॉज कंटिन्यूस सब्जेक्ट हो गया. डिड आई एवर डिविएट फ्रॉम द टॉपिक सर? डिड आई एवर डिविएट इन दिस 72 minutes? I just focused on subject, yes or no? But I'm a bit concerned with this generation. As a guide, as a teacher, as your supporter, I'm concerned with your generation. So you may be wondering, sir, what is the reason for that concern? I'll tell you the reason. Now I want to share just 2 minutes, sir. Then we'll come back. The most unfortunate part is when a teacher is giving a content, good content, people don't watch that content. Suppose I give you a thumbnail like how to get first rank in 4 weeks. उसके लिए हजारों लाखों व्यूज आते सर. कहां पे जा रहा है सर? एवरीथिंग इज फर्जी. आप ना ये थंबनेल देखकर इतना शॉकिंग, मतलब व्हाई आर यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट? क्या उससे आप फायदा होगा सर? आई डोंट अंडरस्टैंड सर. हाउ टू स्टडी लेस एंड गेट मोर मार्क्स, कभी ऐसा होता है सर? सी प्लीज, आप एक राइट डायरेक्शन में जाइए सर. And you just see like in my like on this online platform in 5 years, एक भी वीडियो मतलब जो आपको डिबेट करने वाला नहीं है सर. 98% is content. 1 or 2% hardly some information like solving gate paper, something like that. मैं जो बोला सही बोला गलत बोला सर? बताइए सर, आप बताइए. You just tell me sir. सर आपके कोई कमेंट्स भी नहीं आ रहा है सर, मतलब मैं बंद कर दूं? You want me to how to study effectively? मतलब I don't know why are you so much dependent. अरे यार, I'm not receiving your comments. What's the problem? क्या हुआ? क्या हुआ? Yes, अब आ रहा है. So be careful sir, be careful sir. You should become independent. If you want to become independent, you should think rationally, logically. Logical thinking is must. ठीक है सर, ये ले लो. This is what I was explaining. ये मैं derivation किया था सर. This I derived in class. देखो, when a helical spring is subjected to axial load, क्या होगा सर? I told very clearly. देखो सर, this is the axial load and this is the torque. देखो एक बार डायरेक्शन देखो. So yes, this is the inner fiber, this is outer fiber. See the direction. Inner fiber पे नीचे आ रहा है सर ये, और ये outer fiber पे ऊपर जा रहा है.
So both are in opposite direction, so net effect will be less. Both are in the same direction, net effect will be more. So inner fiber is highly stressed, so inner fiber will fail first. Did I not tell this? I have derived, sir. Bola? Yes, sir. And what is the shear stress, sir? The shear stress is given by 1 plus 1 by 2c into 8wd by pi d cube. ऐसा कुछ दिया था सर. D is mean coil diameter and D is wire diameter. And C is spring index, that is capital D by small d. And this is known as shear stress factor. बोला था मैं. So the maximum shear stress is given by Ks into 8wd by pi d cube. Something like this I gave you. And in this, the curvature and stress concentration effect is not taken. So in Wahl's factor, if I introduce Wahl's factor, which takes the curvature and stress concentration into account, so the same equation, अगर curvature effect लेना है, तो I write this as Kw 8wd by pi d cube. So where Kw is given by 4c minus 1 by 4c minus 4 plus 0.615 by c. This is the Wahl's stress factor. Is it okay, sir? बताया था मैं क्लास में एक टवल लेके एक्सप्लेन किया था सर. सो व्हेन द लोड इज अप्लाइड, देखो एक सेकंड, समवन आस्क्ड मी हाउ सर, इधर देखो एक सेकंड. तो यू टेक एनी सेक्शन, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर होगा. when you are applying like this, there will be a torque like this. So अगर हम ये ले रहे हैं, so देखो कॉइल करके स्ट्रेट करो, वो ट्विस्ट हो जाएगा सर, ट्विस्ट हो जाएगा. दिस आई हैड एक्सप्लेन वेरी क्लियरली. तो इधर shear stress नीचे आएगा and load is also like this, and here ऊपर, both are in the same direction, so यहाँ पे प्लस होगा. I explained very clearly sir. किसी को याद है सर? inner fiber is highly stressed. ये ले लो, बोलो सर जी. मित्रों, yes. देखो ये शाफ्ट है and it is supported in bearings and there is a gear and it is transmitting power. Whenever there is a gear, there is a weight, it is subjected to bending moment. तो bending moment तो रहेगा ही रहेगा, bending moment तो रहेगा ही रहेगा. It's something like this. इधर देखो सर, ये bending moment तो रहेगा ही रहेगा. So bending stresses will be there and moreover it is transmitting power. So torque transmit कर रहा है. So because of torque transmission, it is subjected to torsional shear also. अब बताओ sir, what is the answer sir? Normal stress is due to bending, shear stress is due to torsion. So it is correct. It is correct. Is it okay, sir? Yes. ये बताओ सर, कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं सर, ये देखते हैं सर. ट्राई दिस. बी, समवन सेड बी. इसका आंसर दे रहे सर. सर इट इज क्यूब ओनली सर. ऑल आर क्यूब ओनली सर. बी, ए. समवन सेड ए, समवन सेड बी. मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना, बट आई विल गिव यू द क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट. देखो सर, the initial diameter is 20. Is it 20? And the final diameter is 19. तो अब देखना सर, ये 20 है और ये 19 है.
This is removed. Correct, sir? Is it correct? This is removed. ये material removed. Yes or no, sir? ये initially is 20, final is 90. So ये निकाल दिया गया सर, ये निकाल दिया गया. Can you calculate this area? This much is अरे यार initially it was 20, now it is 19. तो मतलब this much portion is removed, material removed. तो ये वाला गया ना रे. तो can you calculate this area? By R naught square minus R square. What is the discharge or volume flow rate or material removal rate? It is the area which is removed along the length. What is the length removed? Sit. अब calculate करो सर आप. Can you do it? Can you do it? By RO square minus RS square into the feed velocity is given. What is the feed velocity? 200. That's it, sir. Okay. ये करो. कितना आ रहा है? I don't know, sir. Calculation part. कितना आ रहा है, sir? A आ रहा है. Okay. I don't know calculation. You have to do it. ये करो, sir. देखते हैं, sir. करो. ये वाला करो. ध्यान से सुनो. When are you, sir? पहले आप crank का definition बताओ, sir. First, you tell me what is the definition of crank. What is the definition of crank? Anyone in the class? Anything which rotates is a crank. Is it correct, sir? Anything which rotates completely is a crank. क्या मैं सही बोल रहा हूं, sir? I don't know. I'm asking you. Which rotates about fixed point. Which rotates about fixed point is a crank. ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में अगर 360 डिग्री घूम रहा है क्रैंक नहीं. क्रैंक मींस इट शुड मेक कंप्लीट रोटेशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट. सपोज फॉर एग्जांपल ये इसको मैं फिक्स कर रहा हूं, यहाँ पे फिक्स कर रहा हूं और ये घूम रहा है कंप्लीटली. यस इट इज अ क्रैंक. अगर फिक्स नहीं किया ये पूरा हवा में 360 घूम रहा है, इट्स नॉट अ क्रैंक. एंड आई टॉट वेरी क्लियरली fully rotatable joints are mounted on the either side of the shortest link. देखो अगर ये शॉर्टेस्ट लिंक है, fully rotatable joints are on the either side of the shortest link. Shortest link के this side इस side fully rotatable joints होते हैं सर. अब देखो देखो now let me fix this shortest link. तो ये तो ऑलरेडी फुल्ली रोटेटेबल है, तो ये क्रैंक मिलेगा. ये फुल्ली रोटेटेबल है, ये भी फुल्ली रोटेटेबल है, ये भी क्रैंक मिलेगा. तो यू विल गेट अ क्रैंक ओनली डबल क्रैंक when the shortest link is fixed. Because जब shortest link fix किए तो fixed point पे ये complete घूमेगा, fixed point पे complete घूमेगा. So this is a double crank. So if you want the double crank, the shortest link must be fixed. Which one is the shortest link, sir? 30, 120, 100, 80. So AB is 30. So AB should be fixed. Now आप बताइए सर. मैं आपसे पूछूंगा सर, शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट को फिक्स करूंगा सर. देखो देखो एक सेकंड, आप बताइए सर. शॉर्टेस्ट के अपोजिट को फिक्स करूंगा, क्या मिलेगा सर? इफ आई फिक्स अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट लिंक क्या मिलेगा सर? देखो देखो, इज दिस फुल्ली रोटेटेबल? नो, because fully rotatable are on the shortest link. Shortest link. Is this fully rotatable? No. तो ये रॉक करेगा और ये भी रॉक करेगा. तो यू गेट रॉकर रॉकर. नाउ शॉर्टेस्ट लिंक के देखो, इफ आई फिक्स शॉर्टेस्ट लिंक के बगल का वाला फिक्स करूंगा तो क्या मिलेगा सर? शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाला. तो ऑलरेडी इट इज फुल्ली रोटेटेबल. ऑलरेडी इट इज फुल्ली रोटेटेबल. दिस इज नॉट फुल्ली रोटेटेबल. तो ये रॉक करेगा और ये रोटेट करेगा. सो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा. इज इट ओके सर? बोलो सर जी. ब्रेजिंग में कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं सर?
Yes, it is borax. What is the reason for that? Why do we need this flux? What is the reason for that? Because अगर आप ब्रेस कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन विल प्रिवेंट द वेल्डिंग. तो ऑक्सीडेशन ना होने के लिए हम बोरैक्स को यूज करते हैं सर. बोरैक्स इज द कॉमनली यूज फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग. ठीक है सर जी. ये बताओ, ये आंसर दीजिए सर. बहुत सारे क्वेश्चंस करना है सर हमें. For water, the latent heat is 334 kilojoule per kg. The specific heat is maybe liquid के लिए एक ही specific heat होता है, Cp और C तो एक ही होता है. It is 4.19 kilojoule per kg per Kelvin. Quantity of heat removed from 1 kg of water at 30 degrees to convert it into ice at 0 degree. आपको water is available at 30. First you have to convert water at 30 to water at 0. Water at 0. Then water at 0 to ice at 0. ठीक है. तो यहां पे सेंसिबल हीट होगा, यहां पे लेटेंट होगा. सो देयरफॉर mc वाटर डेल्टा टी प्लस m इंटू लेटेंट हीट. m तो कांस्टेंट है, बाहर लीजिए. Specific heat of water into temperature difference plus latent heat. Excellent, sir. What is the mass, sir? Mass is 1. The specific heat of water is 4.19. And what is the temperature difference, sir? The temperature difference is 30 minus 0 is 30 plus latent heat. The latent heat is 334. तो ये वैल्यू कितना आ रहा है सर? 459 should be correct. ठीक है सर. ओह 36 क्वेश्चंस हो गए. थोड़ा ब्रेक ले ले सर. देखो, shall we take a break of बोलो. यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 29 दिख रहा है. तो विल मीट एट 2:35. ओके चलो. वी विल. अभी ब्रेक टाइम स्टार्ट नहीं हुआ सर. अभी ब्रेक टाइम स्टार्ट हुआ. योर ब्रेक टाइम स्टार्ट्स नाउ.
So am I audible? Am I audible? वॉइस आ रहा है? यस यस यस. Can you hear me? Yes, voice is clear. Chalo, we'll proceed. A point load applied at the shear center. Always remember, shear center में load apply करके हम shear center वो है जहां पे no twisting, only bending, no twisting, no twisting, only bending. Is it okay? Voice is clear ना? Shear center पे only bending. I have covered neatly in class, sir. ये बोलो. Do this question. बताया था ये. Come on. A cantilever beam of cross-sectional area A, moment of inertia I, length L, has a natural frequency omega 1. If the beam is accidentally broken into two halves, the natural frequency of the cantilever. Actually ये बोलना था cantilever beam with a point load. ठीक है सर, कोई बात नहीं. देखो, मान लो there is a cantilever beam सर, इधर देखो, and say there is a load W. Now, suddenly it is broken into two pieces and the length is L by 2. He is asking the natural frequency. आप जानते हैं सर, what is the static deflection सर, एक बार बताओ. इसके लिए the deflection is WL cube by 3EI. ठीक है सर. आप बता सकते हैं सर what is the stiffness? Stiffness is equal to W by delta. What is W by delta? It is 3EI by L cube. Can I say that? Are you changing the material? No. Are you changing the cross section? No. So as long as the cross section is not changing, material is not changing, 3 is constant. So can I say the stiffness is inversely proportional to the cube of the length? The natural frequency omega is root k by m. ठीक है सर. ना बोलो सर, या फिर ऐसे कर सकते हैं. तो अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा, मेरे प्यारे दोस्तों, लुक एट केयरफुली. और एक बात है सर, यू नो द स्टैटिक डिफ्लेक्शन, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज रूट जी बाई स्टैटिक डिफ्लेक्शन. ऐसा भी कर सकते हैं हम. तो आप बताइए, एज द लेंथ इज डिक्रीजिंग, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू रूट के. जब लेंथ घट रहा है, लेंथ घट, देखो एक बार देखो, लेंथ घट रहा है एंड क्यूब से, so when the length is decreasing, what will happen to omega? Omega will increase. Yes or no, sir? So omega 2 will be greater than omega 1. Clear? Clear? ठीक है, ये करो, दिखते हैं सर. Do this, we'll see. Do this, we'll see. The vapor pressure in mm of mercury of solid liquid ammonia is given by ln P is equal to 23.1 minus 3749 by T. The vapor pressure of solid and liquid. ये solid का है सर, and liquid का क्या है सर? liquid का. तो ln liquid का क्या है सर? ln P is equal to 19.6 minus 3049 by T. This is liquid.
Now ट्रिपल पॉइंट बोला है सर, कैन यू टेल मी ट्रिपल पॉइंट पे वेदर इट इज अ सॉलिड और ट्रिपल पॉइंट पे you know what is the degree of freedom, sir? At triple point, what is the degree of freedom? Zero. What does it mean? At triple point, no intensive properties can be varied. So triple point temperature or triple point pressure is fixed. Whether it is a solid or liquid or vapor, this pressure for solids and liquids, this temperature for solids and liquid, अगर ये ट्रिपल पॉइंट का है, अगर आपको ट्रिपल पॉइंट चाहिए, तो whether it is a solid or liquid, triple point pressure, triple point temperature will remain same because triple point is a unique state. तो दोनों को इक्वेट करना, ये एलएनपी अगर देखो, if this is a triple point pressure, this will also be triple point pressure. If this is a triple point temperature, this will be triple point temperature. So left hand side is same, LNP LNP, right hand side को इक्वेट करना. तो 23.5 minus 34, sorry, 3749 by TTP is equal to 19.6 minus 3049 by TTP. So I think everything is known. You can easily calculate. कितना आ रहा है सर TTP? I think you are getting the answer as 200. Is it correct, sir? Can you calculate? Yes. याद रखना ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड हो या लिक्विड हो या वेपर हो, ऑल विल बी सेम. ये करो, ये करो. रिदम ब्रेक हो गया, ब्रेक देने के बाद भाग गए बच्चे. An aluminum ring of mean diameter 5 meter at ambient temperature is dipped into liquid nitrogen bath. What will be the mean diameter of the ring in the liquid bath? The coefficient of linear expansion is alpha दे रखा है सर. alpha कितना है? 20 into 10 की power minus 6 per Kelvin. ठीक है सर. कंफ्यूज मत हो ना सर, whether it is degree centigrade or Kelvin, it will be same because it is the temperature difference. आप बताइए सर, what is the meaning of alpha? It is the strain per unit temperature difference, sir. So as it is difference in temperature, it doesn't matter whether it is a Kelvin or whether it is in Kelvin or degree Celsius. Okay, कोई बात नहीं सर. देखो, now और क्या दिया है सर? The alpha is given. So ambient temperature is 24 and what is the liquid bath temperature, sir? The liquid bath temperature is 77. देखो liquid bath temperature is very low, very low. तो मेरा जो ring है, is it heating or cooled? Is it heated or cooled? You have put this aluminum ring which is at a room temperature of 24. Aluminum ring is at a room temperature 24. That is put in cold bath temperature. So you tell me what is 24 degrees centigrade? 273 plus 24. So 277. Is it correct? Sorry, 297. So cool हो रहा है. So when you are heating it, it expands. When you are cooling, it contracts. बहुत बढ़िया सर. अब देखो, this is Kelvin. आप बताइए, what is delta T? Delta T is, this is 297 and this is 77. What is the temperature difference, sir? Is the temperature difference 220? Is the temperature difference 220? So whether I write Kelvin or degree Celsius, as it is a difference temperature, it doesn't make any difference. देखो, आप बताइए, what is the definition of alpha? It is the strain per unit temperature difference. That is the meaning of alpha. Alpha is nothing but strain per unit temperature difference. Now, what is a diametral strain, sir? Alpha is equal to, the diametral strain is change in diameter to the original diameter. That is the diametral strain by temperature difference. So what is the change in diameter? The change in diameter is alpha d delta t. So the change in diameter is alpha. What is alpha, sir? 2 into 10 power minus 5. अरे यार, ये zero गया, तो 20 into 10, 2 into 10 power minus 5. And diameter, what is the diameter, sir? What is the diameter? The diameter is 5 meter. And the temperature difference, what is the temperature difference? It is 220. So this answer you get it in meter. Why meter? Because this is in meter. So क्या आप मुझे diameter का change बता सकते हैं, sir?
क्या आप डायमीटर का चेंज बता सकते सर? सी ऑप्शन होगा ही नहीं, बहुत सही बोले, सी इज रूल्ड आउट। तो व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर सर? अरे यार, व्हाट इज द 10, ये वाला 0.022। so therefore the diameter change, is the diameter increasing or decreasing? It is a contraction, diameter should decrease. So therefore original diameter is 5, the change in diameter is 0.22, उसमें से कार्डूम टाका मीन्स रिमूव, तो कितना आ रहा है सर ये? Is it okay? Is the question clear sir? Is this question clear sir? Oh my god, we did 40 questions, salute sir, बहुत अच्छा लग रहा है। In an accident site, tire marks show car was traveling along a straight level street, skidded for a total distance of 23 meter. The distance is 23 meter. After brakes applied, okay, the coefficient of friction is 0.5. What was the probable speed when the brake applied? कैसे करेंगे सर? मेरे प्यारे दोस्तों, when you are applying brakes, skid होके रुक गया, which force is stopping the vehicle? अरे यार, एक सेकंड, यहाँ पे लैग भी हो रहा है सर, मेरे इसमें तो लैग बता रहा है सर ये, आई डोंट नो। इज देयर एनी लैग? इज देयर एनी लैग? सब सही है ना? हाँ जी सर, देखो एक बार, देखो एक बार ध्यान से सुनो। So net force is, according to Newton's second law, net force is ma, but that should be equal to frictional force. What is frictional force? Mu mg। नहीं आ रहा सर। So अगर कार यहां पे है, अगर इसका वेट ऐसा है, तो रिएक्शन ऐसा है, वेट इज mg, so reaction is mg, so therefore the frictional force is mu into r, mu mg, तो ये गया। तो acceleration is mu into g, excellent sir। And you also know v square minus u square is equal to 2as, so what is the final velocity? 0, so u square is equal to 2as। बिल्कुल सही है सर, बट एक्चुअली इट इज नॉट, ये तो फाइनल वेलोसिटी, इट इज स्टॉप्ड का मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0, सो देयरफॉर u square is 2as, actually this a is minus a, why sir? It is retardation, retardation, ये आ गया सर, बहुत बढ़िया। ही इज आस्किंग यू कैसे करेंगे सर? नाउ यू हैव एवरीथिंग इज रेडी, u square is 2s into a is mu g, g को कितना लेने के लिए बोला है सर? कुछ बोला है सर? we'll take it as 10, so u square is equal to 2 and the distance is 23 and the friction is 0.5 and g is चलो 9.8। आज के लिए कैलकुलेटर यूज करना सर, तो आज के लिए कैलकुलेटर यूज करना सर। पता नहीं यार, मेरा कैलकुलेटर गुम हो गया, आई डोंट नो वेयर इज माय कैलकुलेटर। नो, हियर इट इज। कितना आ रहा है सर? 15 आ रहा है ना? सो इफ यू कन्वर्ट इन मीटर, देखो 15 आ रहा है ना सर? 15, roughly 15, 15 point something आ रहा है, okay, so therefore you know it is 15 meter per second, so 15, what is 1 meter? 1 by 1000
किलोमीटर होगा। अरे मीटर को मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो किलोमीटर। ओके, सेकंड को 1/3600 आवर होगा सर। सो कितना आ रहा है सर ये? आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज 54। इज इट करेक्ट सर? करेक्ट। यस। ये कर करो सर। देखो सर, आई टेल यू वन थिंग। देर आर three objects of same outer diameter. One is ring, sorry, one is a hollow cylinder, one is a solid cylinder, other is a sphere. ठीक है सर? I have explained in my mechanics class and मेरा YouTube पे भी एक वीडियो है सर प्योर रोलिंग का। देखो सर, the acceleration is given by, ऐसा कुछ डिराइव किया था सर मेरा YouTube, एक बार YouTube पे देख लेना सर, 1 प्लस बीटा, कुछ ऐसा दिया सर। ठीक है, वेर बीटा इज, ध्यान से सुनो, एक सेकंड सुनो सर, आई विल एक्सप्लेन वेरी क्लियरली, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन अगेन आई विल एक्सप्लेन। ये क्वेश्चंस आएंगे सर, ये क्वेश्चंस एक्चुअली कैसे सर, इधर देखो, लेट दिस एंगल बी थीटा, लेट अस से सिलेंडर और स्फीयर जो भी है रोल कर रहा है, तो इसका अगर ये प्योर रोलिंग में है तो इसका एक्सेलरेशन होगा जी। सर वेयर फ्रॉम यू गॉट दिस, मैं बताता हूं। यू टेक कंपोनेंट्स, यहाँ आपका फ्रिक्शनल फोर्स और इसके कंपोनेंट देखें, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हेन यू सिंप्लीफाई यू गेट दिस एक्सेलरेशन। तो विच वन विल कम टू द ग्राउंड फास्टर? ऑल आर केप्ट ऑन द सेम इंक्लाइंड प्लेन। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ये सर नो सर, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है तो फास्ट आएगा। सो देखो, इफ ए इज लार्ज it will reach faster, it will reach ground, ये ground है, it will reach ground faster। ठीक है सर? if a is large, if a is large, if a is large, it will reach ground faster। ठीक है सर? ठीक है सर? तो a large है तो बीटा क्या होना चाहिए सर? if a is large, बीटा should be, if a is large means a large का मतलब डिनोमिनेटर लेस, डिनोमिनेटर लेस मींस ये तो कांस्टेंट है, बीटा शुड बी लेस। लेकिन सर व्हाट इज बीटा? वेरी गुड क्वेश्चन सर, व्हाट इज बीटा? You know, the moment of inertia of sphere is 2 pi phi mr square. The moment of inertia of cylinder or disk is mr square by 2. The moment of inertia of hollow cylinder is mr square. Very good. The coefficient of mr square is known as beta. So beta for sphere is 2 by 5, which is 0.4. Beta for क्या बोलते हैं, cylindrical disk is equal to half 0.5, and beta for hollow cylinder, beta for hollow cylinder, mr square, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1। ठीक है सर? अब बताइए सर, जिसका बीटा कम है वो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फास्ट। विच बीटा इज लेस? विच बीटा इज लेस? हियर विल रीच फास्टर, इट्स बीटा इज लेस, इट विल रीच फास्टर। बीटा कम है तो ये डिनोमिनेटर कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा, फास्ट रीच होगा, फर्स्ट स्पीयर आएगा। उसके बाद
बीटा इज 0.5, उसके बाद सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर बीटा इज हाई, मींस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, वो स्लो आएगा सर, इनर्टनेस विल बी मोर। तो एम आर स्क्वायर इज मोर फॉर हॉलो सिलेंडर एंड एम आर स्क्वायर बाई 2 ये कम है, 2 बाई एम आर स्क्वायर ये और कम है, तो स्पीयर विल रीच फर्स्ट, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद हॉलो सिलेंडर। इज इट क्लियर सर? हे भगवंता, ये बच्चों को क्या हो रहा है? So the answer is reaching, what is the order? First it will be sphere, then it will be solid cylinder, then it will be this. Is C correct? अच्छा क्वेश्चन था सर ये. This was a good question. So I request you to remember this. ये वाला. If you want, I can derive this. मुझे कोई दिक्कत नहीं सर. I can derive this. यार ये लैग हो रहा है या is everything fine? लैग हो रहा है या is everything fine? Sir, someone asked me, sir, yes, derive. You go to YouTube, you just type प्रवीण कुलकर्णी प्योर रोलिंग, आपको सिर्फ वीडियो नहीं आएगा, मैं मॉडल्स बना के प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया सर, मॉडल्स बना के। चाहिए तो अब शो करता हूं सर, एक सेकंड, आई विल शो यू। 1 second, आई विल शो यू। 1 second, आई विल शो यू। 1 second। आज हमारे साथ हैं के 2025 के और 1 second प्लीज। आई विल शो यू। देखो, आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, इधर देखो। अरे यार ये कहाँ गया? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया सर, पता नहीं ये शो नहीं कर रहा है। सो आप ये देखो, प्योर रोलिंग एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लीज, आई हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड इन क्लास। पता नहीं यार, नेटवर्क मेरा ही प्रॉब्लम है यार। और all experiments what you just see, अभी सर रेस स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों का रेस। एक सेकंड। दिखा? फर्स्ट सॉलिड रीच हुआ सर, फर्स्ट सॉलिड रीच हुआ, फर्स्ट दिखा रहे? कैन यू, नेट स्लो है क्या? आपका नेट स्लो है या मेरा नेट स्लो है? इज एवरीथिंग फाइन? ये बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया सर, ऑल कॉन्सेप्चुअल। सी दिस क्वेश्चन, टेक दिस, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। A cylindrical body of diameter 2 meter, height 1.5 meter, having a mass of 2 ton. Can I say 2 ton का मतलब 2000 kg? हाँ जी सर. Floats in seawater with its axis vertical. A lightning equipment is placed on the body such that water level is at least 0.5 meter below the top of the surface. मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली क्या है.
ये हाइट कितना है सर? SW means sea water. ध्यान से सुनो सर. The diameter is 2 meter. And the height is 1.5. इसका मास, इसका टोटल मास है 2000 kg. It floats in water with its axis vertical. ठीक है. A lightning equipment is placed on the body such that the water level is at least water level is at least 0.5 below the top surface. इस top surface से this should be 0.5. So if the total height is 1.5, from the top surface, the water surface is 0.5, the depth of immersion is nothing but 1 meter. And on this, some equipment is placed. Either dekho. On this, some equipment is placed. Let the mass of that equipment be, some m. Very good. तो ही सेज व्हाट शुड बी द मैक्सिमम मास प्लेस. अगर ज्यादा मास प्लेस करते जा रहे हैं ये डूब जाएगा, बट इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द कंडीशन? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू बायनेंसी फोर्स व्हिच इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस. व्हाट इज द टोटल वेट सर? 2000. इसका मास m है, सो द टोटल मास विल बी 2000 plus m into g. Total weight should be equal to buoyancy force. What is buoyancy force? Rho of the fluid, g into volume of the fluid displaced. ये g कट जाएगा. So 2000 plus m, it is water. But देखो, it's not normal water, it is sea water. So what will be the density, sir? The specific gravity is 1.02. So multiply with 1000. So the density is 1020. And what is the volume of the fluid displaced? Whatever is immersed in water, that is. So area into depth of immersion is 1. Area is pi by 4 d square, that is pi by 4. Diameter is 2 square and the depth is 1. तो यहां से you will get the value of m. क्या आप m का वैल्यू बता सकते हैं सर? Sir, you people should involve, sir. How long do you want me to struggle? This is not fair, sir. मैं करता हूं सर. 1020 into 3.14 minus 2000. ये आ रहा है 1202 kg. Is it correct? No. Is the answer correct? अच्छा, जी को कितना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. या सो अराउंड 12 नॉट समथिंग आ रहा है. ठीक है, ये करो, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे. आंसर दीजिए. एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज चैलेंज्ड, लेकिन मैं ऑप्शंस चेंज किया. डोंट वरी, नाउ यू आंसर. जी तो कैंसिल हो रहा ना रे. इधर देखो, जी तो गया ना, जी तो गया ना रे. वेट इज एम जी, जी तो गया. हाँ जी सर, मल्टीप्लाई करो. मेरा क्या जा रहा है? शिव कुमारा, शिव कुमारा, शिव शिव कुमारा. Navier-Stokes equation includes this. देखो, Euler's equation, it takes pressure force and gravity force.
Euler's equation neglects viscous force. Euler's equation is applicable for inviscid. Inviscid means non-viscous. Yes, sahi hai sir. It's absolutely correct. Bernoulli's equation is applicable to steady flow. Yes, we apply Bernoulli for steady flow. ये भी सही है sir. Viscous forces are not considered in Navier-Stokes. गलत गलत. Viscous forces are considered in Navier-Stokes. ये गलत. Third is गलत. Statements 1 to 3 are गलत. Statements 3 and 4 are correct. गलत. All the statements are correct. एक बार देखेंगे. All the statements कैसे गलत सर. All the ये already third statement is wrong. गलत. So statement 1 and 2 are correct. Answer is A. बोलो एक बार A. है ना. करो रे करो रे करो रे करो रे करो रे करो रे. Sir, enthusiasm is, there are two things in life. जिसके पास ये दो है ना, मजेदार है सर. A wall of chemical plant is modified with two addition. देखो, this is the initial wall, sir. Let the thickness of the wall be L and the thermal conductivity be K. The wall is modified with two additional layers having half the thermal conductivity of original. मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं? The same wall है sir. This is L, the thermal, and what he is doing is like it is covered with additional two layers of half the thermal conductivity. देखो देखो एक सेकंड. देखो, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी आधा और आधा है सर. और इसका थिकनेस दिया है, देखो एक बार. द इनर लेयर, दिस इनर लेयर इज हाफ द थिकनेस and the outer layer is same as the original thickness. ठीक है सर. देखते हैं सर. You know, is he talking about temperatures? ना, temperature तो same रहेगा. Delta T is equal to Q into R. The temperature drop is, this temperature difference is not changing. So can I write Q into R is equal to instead? Can I write? Yes sir. तो देखो, first case में Q1 R1, second case में Q2 R2, it should be constant. What is the resistance in first? यहाँ का resistance है L by K. I am not writing area. Per unit area calculate करेंगे. What is the resistance here? L by K. They are in series. This plus this. L by 2 L by K plus L by K plus L by K by 2. L by 2 by K by 2. L by K. L by K by 2. तो ये गया तो L by K. A by L by K. L by K L by K. 2L by K प्लस ये 2 ऊपर जाएगा 2L by K. सो ये 2L by K ये हो जाएगा 4L by K. सो सेकंड इस केस में रेजिस्टेंस आ रहा है सर. इन दिस केस इट इज 4L by K and in this case the resistance is L by K. अब पुट करो Q1 into पहला रेजिस्टेंस is L by K. Q2 into the second resistance is 4L by K. ठीक है सर. L by K is gone. तो Q2 is equal to Q1 by 4 or Q2 is equal to 0.25 Q1 means the what will be the heat flow in the modified? In the modified case, it is 25% of the original one. So answer D. अच्छा क्वेश्चन था सर ये. Say something यार. ये
Three metal balls are suspended by three wires ABC of equal length arranged in sequence as shown. The masses of balls starting from the top are 2, 4, 3. The wire diameters are 2, 1.2, 1.21. The increasing order of stress. इसका डायमीटर दिया है 2, इसका डायमीटर ये ए है, ये ए मान लो, ये बी है 1.2 mm, ये सी. This mass is 3, C mass is 3, this mass is 4, and this mass is A. And it is hanged like this. What are the stresses in increasing order of stress? बोला है सर, आराम से टेंशन मत लेना. इंक्रीज देखो सर, इसको हम यू टेल मी इस वायर में स्ट्रेस क्यों आएगा. लेट अस टेक द इक्विलिब्रियम. इसका ये वाला ले लेंगे. आई एम टेकिंग सी पोर्शन. कट करो इसको. यू कट इट. इफ आई कट इट, व्हाट इज द मास सर? इसका मास है 3 mg. 3g. mg is 3g. So is it falling? No. So what should be tension in this? इस वायर में फोर्स कितना आ रहा है सर? इस वायर में, एक सेकंड प्लीज, जस्ट 1 मिनट. नहीं है ना जी. आप कोई भी नहीं है, फोकट वाला है. करते हैं, कल आते. हाँ करते. टाइम नहीं है अभी, टाइम नहीं है. ठीक. क्या है? नहीं बोलना नहीं नहीं. चलो 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 स्टार्ट करें. है ना, देखते हैं. तो अगर इसका ले लेंगे तो इसमें फोर्स कितना आ रहा है सर? इसमें फोर्स कितना आ रहा है सर? सो दिस इज इन इक्विलिब्रियम, सो 3g. तो इसमें फोर्स आ रहा है 3g. तो आई एम टॉकिंग अबाउट सी. फोर्स बाय एरिया. व्हाट इज द फोर्स? 3g. एंड व्हाट इज द एरिया सर? पाई बाई 4. इसका डायमीटर है 1. ठीक है. सो अब इधर आइए सर, इधर कट कीजिए, बी में कट कीजिए. सो व्हेन आई कट, देखो एक बार, ये कट कर दिए सर, ये यहां तक कट कर दिए. तो ये 4 + 3, टोटल ये 4 है और ये 3 है, मतलब ये टोटल 7. तो 7 शुड बी बैलेंस विथ 7. मास इज 4 mg. तो व्हाट विल बी द स्ट्रेस इन दिस? इसमें स्ट्रेस क्या होगा सर? सो इसमें बी में स्ट्रेस होगा फोर्स बाय एरिया. फोर्स इज 7g एंड द एरिया इज पाई बाई 4 d स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर. लास्ट वाला ले लेंगे सर. सो लास्ट वाले में, इसमें इट इज सपोर्टिंग दिस. सो लास्ट वाले में कितना होगा सर? ये टोटल, ये वाला, ये वाला, ये वाला. दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस 2. टोटल इज 7. 7 + 3 सही है सर? 6 7 8 9. ये 9 आ रहा है सर, 9. तो इसमें 9 आ रहा है सर. व्हाट विल बी द फोर्स इन ए? इट विल बी 9g बाई एरिया. व्हाट इज द एरिया? इसका डायमीटर है पाई बाई 4 इंटू 2 स्क्वायर. एक्सलेंट सर. एक ऑब्जर्व सर, ये समझ में आया सर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस सर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस सर? अरे या, इट इज सपोर्टिंग 3 kg, 3 by its area. It is support, this is supporting 4 + 3 7, 7 by this area. It is supporting 2 4 3, तो 9, 9 by this area. ओके फाइन. इसमें स्ट्रेस पाई बाई 4 d स्क्वायर, इसमें पाई बाई 4 1.2, इसमें पाई बाई 4 1 स्क्वायर. देखो देखो एक बार, g बाई पाई बाई 4, g बाई पाई बाई 4, g बाई पाई बाई 4 इज गॉन. तो ये बचा कितना? c में कितना है सर? 3/1. सो बी में कितना है सर? 7 बाई 1.2 1.2 1.44. एंड ए में कितना है सर? इट इज 9 बाई 2 स्क्वायर. ये 2 स्क्वायर है सर. सो ए में, सो 4. तो ये 2.25 आ रहा है ना सर? ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना सर? गलत है. और ये आ रहा है 3. तो व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेस. फर्स्ट इट विल बी ए, फर्स्ट इट विल बी ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए सी बी.
इज द आंसर करेक्ट सर? नहीं आ रहा है सर आपको? ठीक है, ये करो सर। Do this, sir. Good question. You know very well, the strain energy due to bending m square L by 2EI, ये सही है या गलत है सर? ये सही है या गलत है? No, I'm asking you a question. Only one says सही है. Only one says सही है. इंटीग्रेट बोलता है सर लास्ट का। मैं पूछा आपको स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्या प्रॉब्लम है सर लास्ट क्वेश्चन में? क्या प्रॉब्लम है सर बताओ? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द लास्ट क्वेश्चन सर? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द लास्ट क्वेश्चन? कुछ नहीं है सर। This string is supporting only this load, so it will be 3 by uska area. This is supporting this plus this, so it will be 4 plus 3, 7 by this area. This is supporting this plus this. So 3, 2 plus 4 plus 9 आएगा, 9 by this area, 9, 7 by this area. This is, ये क्या है सर? 3 by this area. Is it okay? इसमें कोई डाउट है सर? I don't see any doubt. No. Clear? चलो, this is correct sir. यहाँ पे, but look at in a elastic strain energy stored in a cantilever due to bending moment applied. Due to bending moment, देखो एक बार, the bending moment is applied here. The depth of the beam is, देखो एक बार, the depth is h and the width is b. ठीक है sir? And look at sir, कैसे करेंगे sir? How can I do? वेरी, बट द आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। मैंने तो बेंडिंग मोमेंट के टर्म्स में लिखा, इधर देखो, लुक एट सर, m by I is equal to sigma by y, और sigma is equal to my by I. Is I changing sir? The cross section is constant, bh cube by 12 और bd cube by 12 वो constant है सर, ये चेंज नहीं हो रहा। बेंडिंग मोमेंट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो अगर आपको मैक्सिमम वाला स्ट्रेस चाहिए, दिस शुड बी मैक्सिमम। ठीक है सर? सो देयरफॉर आई विल राइट दिस m as sigma max I by y max. m is equal to sigma max I by y max. देखो, strain energy due to bending is given by L by 2EI into m square. What is m square? Sigma maximum square I square by y max square. Any difficulty sir? I am converting from m to stress. ठीक है सर, सुनो carefully. 1I is gone. So strain energy due to bending is given by sigma max square, ठीक है सर जी, by 2E y max.
Can you tell me what is y max, sir? Y max. देखो, this is the neutral axis. The depth is h. Moment of inertia is b h cube by 12 because it is bending over this. So b h cube by 12 moment of inertia, and y max is h by 2. So e y max is h by 2, लेकिन ये स्क्वायर है तो h स्क्वायर बाई 4. अरे y max is h by 2. क्या स्टूडेंट्स है रे बाबा. This is y max. Y max is h by 2, तो h square by 4. Okay. And I, देखो L कहाँ गया रे वो, क्या लिख रहा हूं सर मैं. देखो सिग्मा मैक्स स्क्वायर सिग्मा, L भूल गए. L I है what is I? p h cube by 12 by 2e y max. ये 4 को ऊपर ले जाना सर. Let me take this 4 to the top. So h square h से गया है. Now strain energy is given by, कहां पे जगह है सर? I will create space here. So strain energy due to bending is given by sigma max square by 4 ones 4 threes 3 twos 6 lbh. Can anyone tell what is lbh? Cross section is b into h. There is a length also. There is a length. lbh is volume. lbh is volume. Is it okay? lbh is volume. So therefore, the strain energy is given by sigma max square volume by 6e. Is C correct? मित्रों, गुड. अरे बोलो रे, कुछ तो बोलो. कुछ तो बोलो मेरे मित्रों. ठीक है. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन सर, इंडीड. हाँ, ये मस्त क्वेश्चन है सर. मस्त क्वेश्चन है रे. मस्त क्वेश्चन है. A member is subjected to a fluctuating stress. Sigma is equal to sigma naught into cos of phi phi t. The endurance limit is 360. उतना ज्यादा है क्या endurance limit? Yield stress is 500. The factor of safety is 3.5. The maximum value of sigma naught according to Soderberg theory. मुझे बताओ सर, as per Soderberg theory, यहां पे हम लेते हैं वेरिएबल स्ट्रेस. हियर आई टेक मीन स्ट्रेस. इफ इट इज अ सोडरबर्ग स्ट्रेस, इट विल बी यील्ड स्ट्रेस आएगा, यहां पे एंड्योरेंस आएगा. डू यू नो द इक्वेशन ऑफ लाइक सोडरबर्ग इक्वेशन? बताओ सर. ये मस्त क्वेश्चन है सर. सो आई विल राइट, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, दिस वाई इंटरसेप्ट. x by a, x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1. बट यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा. आई थिंक यू नो दिस इक्वेशन. मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये इक्वेशन आपको पता है सर? डू यू नो दिस इक्वेशन? डू यू नो दिस इक्वेशन? हाँ यार. यस, वेरी गुड सर. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सर. क्या पूछा है सर? सिग्मा नॉट पूछा है सर. देखो देखो देखो, नाइदर आई नो मीन, नाइदर आई नो वेरिएबल. देखो देखो, व्हाट इज मीन स्ट्रेस सर? सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाय 2. व्हाट इज वेरिएबल स्ट्रेस सर? सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाय 2. ठीक है सर. अब बताओ सर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस? व्हेन डू यू एक्सपेक्ट दिस वैल्यू टू बी मैक्सिमम? व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज 1.
सो कैन आई से जब ये 1 है ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं सर मेरे प्यारे बच्चों, कैन आई राइट सिग्मा मैक्सिमम एज एनीवन इन द क्लास? व्हाट इज सिग्मा मैक्स? कॉस, जब ये कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी, ये तो कांस्टेंट है, जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा। तो इफ दिस इज 1, मैक्सिमम विल बी सिग्मा नॉट। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू सर? कॉस मिनिमम वैल्यू इज -1। नहीं है सर, कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है -1, मैक्सिमम इज +1, मिनिमम इज -1। तो ये -1 होगा सर, ये -1 होगा। तो जब ये -1 होगा दिस विल बी माइनस सिग्मा नॉट। तो आप बताइए व्हाट इज द मीन स्ट्रेस? मैक्स प्लस मिनिमम बाई 2, मैक्स प्लस मिनिमम बाई 2, मैक्स प्लस मिनिमम, मैक्स इज सिग्मा नॉट and the minimum is minus sigma naught by 2. So therefore, sigma mean is equal to 0. And what is variable, sir? Sigma max is sigma naught minus sigma minimum is minus sigma naught by 2. So what is sigma variable, sir? Is sigma variable sigma naught? बिल्कुल सर, यहां पुट करो मीन स्ट्रेस इज 0, तो ये मर जाएगा सर। वेरिएबल स्ट्रेस कितना है सर? वेरिएबल स्ट्रेस कितना है? सिग्मा नॉट। एंड द एंड्योरेंस लिमिट इज 360। ये तो 0 होगा सर। 1 बाई व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 3.5। तो कितना आ रहा है सर सिग्मा नॉट का वैल्यू? कहीं पे गड़बड़ किए सर हम? आई थिंक गड़बड़ किए सर कुछ। एक सेकंड, मैं ओरिजिनल फाइल देखता हूँ सर, क्या वैल्यूज में। मैं ओरिजिनल फाइल देखता हूँ सर, क्या वैल्यूज में। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, लेट मी चेक ओरिजिनल फाइल, आई विल चेक। Let me check the original file. Let me check the original file. ये कौन सा क्वेश्चन है सर? मशीन नंबर गलत हुआ सर। द एंड्योरेंस लिमिट इज, इधर देखो 350, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, एंड्योरेंस लिमिट इज 350। वही तो बोल रहा था मैं, कॉन्सेप्ट तो कभी हम गड़बड़ ही नहीं करते। अयो, ओरिजिनल फाइल। Okay, right. So the answer is this is 350, sir. So it will be 100, na? Is it correct? बोलो, बहुत बढ़िया सर। ये करो फटाफट फटाफट। A plane stress, sir. I will not take your questions now. Let me complete first. The purpose for which I came, let me fulfill. ऐसा नहीं कि मुझे वॉच मिनट्स चाहिए और ये यूट्यूब व्यूज चाहिए, इसके लिए मैं तो करूंगा ही नहीं सर। नो, लेट मी कंप्लीट। उसके बाद लास्ट में व्हेन ऐसे क्लास इज ओवर, जिनको रहना है वो रह सकते, कुछ डिस्कस कर सकते, जिनको जाना है वो जा सकते सर। आई विल नॉट आंसर टू योर, इज इट टू लेट टू स्टार्ट गेट नाउ? बीच में डिस्टर्ब मत करना सर। Ah, a plane stress is okay. Sigma x is given as 4p, sigma y is given as 2p, and tau xy is root 3p, where p is greater than 0. The yield stress is
300. If the member is designed using maximum shear stress theory, the value of P is 10. So, suno sir. So, according to maximum shear stress theory, sigma 1 minus सही है सर हाँ ठीक है सर पहले आप सिग्मा 1 कैलकुलेट करो प्लीज बताइए व्हाट इज सिग्मा 1 sigma x plus sigma y by 2 plus under root of sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau xy square. हाँ, what is sigma x sir? Sigma x, it is 4p. And what is sigma y sir? 2p by 2 plus under root of sigma x is 4p and sigma y is 2p by 2 whole square plus tau xy square. tau इसका square क्या होगा सर? इसका square 3p square. अब बोलो. This is 6p, so sigma 1 will be equal to 6p by 2 is 3p plus or minus. तो यहाँ पे plus or minus sigma 1 sigma 2 ले लेंगे तो ये कितना होगा सर 2p by 2 p square plus p square ये 2p होगा सर तो what will be sigma 1 sir sigma 1 is 5p and sigma 2 is p 3p minus 2p is it correct sir as per maximum shear stress theory sigma 1 minus sigma 2 is equal to sigma yield by 2 correct sir तो ये दो गया तो sigma 1 minus sigma 2 is equal to sigma yield correct sigma 1 is 5p and sigma 2 is p that should be sigma yield what is sigma yield sir sigma yield 300 so therefore 4p is equal to 300 and p is equal to how much sir is it 75 50 आ रहा है क्या हो रहा रुद्र प्रकाश अरे यार according to maximum shear stress theory the sigma 1 minus sigma 2 by 2 should be equal to sigma yield by 2 correct 75 is right ये करो now this is a good question sir देखो a 50 diameter solid shaft is welded to a steel plate all round by a fillet weld of 4 meter leg size ठीक है sir so weld size or leg size is given by 4 so what will be the throat thickness sir the weakest area is throat area so it will be h by root 2 so it will be 4 by root 2 ठीक है sir बहुत बढ़िया and what is the maximum shear stress sir the allowable shear stress is 100 megapascal and what is the torque required you know very well T by J is equal to tau by R so T what is J the polar moment of inertia of thin section ये वेल्ड का सेक्शन देखो वेल्ड ऐसा है सर वेल्ड इज लाइक दिस इट इज अ थिन रिंग तो थिन रिंग के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2 pi r cube t where t is the throat thickness that should be equal to tau by r तो ये r स्क्वायर गया सर टॉर्क विल बी इक्वल टू 2 pi r square t by tau am I right सर गलत है क्या नो गलत है देखो t by j the polar ध्यान से सुनो सर this you have to remember polar moment of inertia of a thin thin ring is 2 pi r cube t by j is 2 pi r cube t is tau by r okay sir तो ये r कट गया 2 pi r square t into tau so torque will be equal to 2 pi what is the radius sir radius कितना है सर 50 तो diameter is 50 diameter is 50 radius is 25 so 25 square and what is the throat thickness the throat thickness is 4 by root 2 4 by root 2 ठीक है सर into tau what is tau sir what is tau tau is given 100 but this value will be in newton क्योंकि all my देखो shear stress is newton per square because it is in megapascal mega means newton per square shear stress is newton per thickness is taken in and r square is square
तो ये mm² गया, पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, अरे ऐसा कैसे जा सकता, हाँ, तो यू विल गेट इन न्यूटन बट द आंसर इज आस्क्ड इन न्यूटन मीटर, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द न्यूटन मीटर में पूछा है, तो व्हाट इज द आंसर सर, बोलो। एक बार हम सॉल्व करते हैं सर। 2 पाई इंटू 25² is 625, 400 बाई √2, कुछ कैंसिल हो सकता है सर? पाई/√2 तो आंसर में है, पाई/√2, एक्चुअली दिस विल बी न्यूटन तो 10⁻³ न्यूटन इज 10⁻³ 1000 से डिवाइड करना, तो कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है सर, इज 10⁻³, तो ये 10 ये गया, तो यू विल गेट 500 पाई/√2 न्यूटन मीटर। A is the right answer. So have you understood the concept, sir? Have you understood the concept, sir? तो मैं बताता हूं, ये जो वेल्ड है ना, दिस इज इन टॉर्शन, ये जो वेल्ड वेल्ड की बात कर रहे हैं, थिन रिंग अगर रेडियस आ रहा है 2 πr³ ठीक है, ये करो, मस्त क्वेश्चन है सर। Look at carefully. This link is sliding on a rotating link. तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा। अब एक बार देखते हैं, सो वेन एवर इट इज रोटेटिंग देर विल बी normal acceleration, ठीक है सर, and the slider is also moving away with an acceleration of 9, ध्यान से सुनो सर, and you know there is a tangential acceleration r alpha, and there is, look at sir, how many accelerations are there, पहले will आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, this question is very very important, let me read sir, a slider is moving outwards, this is a slider, it is moving outwards with a velocity of 3 meter per second, ठीक है, it is moving with a velocity, देखो direction is also given, it is moving outwards 3 meter per second, and the acceleration is 9, मतलब it is moving outwards with a variable velocity, that's why it has an acceleration, ठीक है, the rod has an angular velocity of 7, this rod is rotating, the angular velocity is 7, this is rotating and it is sliding, so on a rotating link if it slides there is a Coriolis acceleration, ठीक है sir, and the angular acceleration is also given 12, ठीक है sir, 12, what is the magnitude of absolute acceleration at point A, at location A, कैसे करेंगे सर, मैं बताता हूं सर, look at, देखो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, normal acceleration, when the link is rotating like this, there will be normal acceleration towards the center, the normal acceleration is omega square r, but it is towards the center, क्योंकि point of rotation is this, जब ये rotate कर रहा है towards the center, तो I'll write this as like this, तो normal acceleration is given by what is omega, link का omega है ओ 7, तो 7 square, what is the radius of rotation, it is 1, this is the radius of rotation which is 1, so therefore it is 49 towards left, this is the normal acceleration, but there is another acceleration radially outward, देखो इसका normal acceleration ऐसा है, ये normal है, but it is sliding, so what is the net acceleration, there is 9 meter per second square outwards also, so net acceleration in the radial direction, anyone, ये 49 अंदर है, 9 बाहर है, तो net will be 49 minus 9 which is 40, what is the direction of this sir, ये 49 ज्यादा है inwards, so therefore it will be in this direction, क्या ये बात सबको सही है सर, so this is the normal acceleration, मतलब net in this direction, अब देखो
जब ये घूम रहा है, देखो व्हेन इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, सी द एक्सेलरेशन, acceleration, angular acceleration alpha is like this. So always remember, in the direction, tangential acceleration will be in the direction of alpha, alpha के direction में होगा. So what is r alpha? The tangential acceleration is given by r alpha. Alpha इस direction में, तो tangential acceleration will be, as alpha is in this direction, in this direction. So as alpha is in this direction, the tangential acceleration will be like this, r alpha. What is r alpha, sir? R is 1, alpha is 12. So therefore ये 80 is, alpha is 12, r is 1. तो ये हो गया sir. Very good. There will be Coriolis acceleration also. Coriolis acceleration will be always, देखो link के perpendicular होगा, but it will be at 90 degree in the direction of omega. Omega is in the anti-clockwise direction. तो ये velocity जो है ना, जो वेलोसिटी है ना, उस वेलोसिटी को 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ले लो, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. रोटेशन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर ये लिंक वेलोसिटी ऐसा है, 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऐसा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन में होगा सर. सो देयरफॉर दिस, ये कौन से डायरेक्शन में है सर? ये नीचे के डायरेक्शन में है. नहीं आ रहा सर, क्यों? क्योंकि अल्फा का डायरेक्शन ऐसा है, अल्फा अल्फा के डायरेक्शन में. सो देयरफॉर tangential means alpha is like this. So ये alpha हो गया. Very good. And what is Coriolis acceleration? 2v omega. 2v omega. 2 times. What is the velocity, sir? What is the velocity, sir? 3. 2v omega. Omega कितना है, sir? 7. 42. 42. 42. ये किस डायरेक्शन में होगा सर? देखो ओमेगा इज लाइक दिस, सो वेलोसिटी इज लाइक दिस. वेलोसिटी को पकड़ के ओमेगा के डायरेक्शन में जाओ. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस एक्सेलेरेशन. कोरियोलिस ऊपर है, तो कोरियोली ऊपर है, and tangential will be in the direction of alpha. So r alpha is in this direction, Coriolis is upward. So what is the net acceleration? So 42 minus 12, दोनों. So it will be 42 minus 12 is 30. That 30 will be in the upward direction. तो इस पॉइंट पे 40 is in this direction net acceleration, और इस पे 30 is in the upward direction. ये 40, ये 30. What will be the resultant, sir? ये 40 और ये 30. What will be the resultant? Both are at 90 degree. Under root of this square plus this square, it will be 50. So answer is 50. ये जबरदस्त question है sir. You people have not understood. Is it clear? Do you want me to explain again? अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं सर. If you want, I can explain again. Say yes or no. Do you want me to explain again or shall I move to the next question? अरे यार, जब ये घूम रहा है तो there will be normal acceleration, but it is sliding. So normal acceleration is in this direction. The sliding acceleration is like this. Net acceleration will be this minus this. And when it is rotating, देखो यहाँ पे अल्फा भी है, अल्फा. तो in the direction of alpha, tangential acceleration होगा. ये ऐसा घूम रहा है तो tangential acceleration ऐसा होगा. But Coriolis acceleration will be, वेलोसिटी वेक्टर को ले लो, वेलोसिटी उसको इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा घुमाओ, ओमेगा. तो ओमेगा इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री घुमा. सो ये वेलोसिटी स्लाइडिंग ऐसा है, उसको 90 डिग्री घुमाओ तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इन द डायरेक्शन ये आएगा. सो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा. दिस इज द कोरियोलिस एक्सेलरेशन 2v ओमेगा. दोनों का नेट ले लो और यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे स्लाइडिंग वेलोसिटी, स्लाइडिंग एक्सेलरेशन होगा. इसका नेट ले लो, इसका नेट ले लो, रिजल्टेंट आया नहीं आया सर? So I am not happy with you people, sir. आएगा सर. Coriolis component is 2v omega. Coriolis component will be there only when the link rotates, only when the on the rotating link, when the one link is sliding. I'll ask you one question. इधर देखो सर, देखो इस लिंक को मैं फिक्स कर दिया सर, यहाँ पे इस लिंक को वेल्ड कर दिया, ये वाले लिंक को. नाउ इट रोटेट्स. Will there be any Coriolis acceleration? Will there be any Coriolis acceleration? हे भगवान.
Will there be any Coriolis acceleration? To this link, I have welded this link. It cannot slide. The Coriolis acceleration is 2v omega. Even though there is a omega, the sliding velocity is zero. Therefore, Coriolis acceleration is zero. Now, for example, let it slide and this is not rotating. Let it not rotate. ये rotate मत होने दो. If it is not rotating, omega will be zero. Means you will have Coriolis acceleration only when there is a simultaneous sliding and rotation. अरे यार कमेंट्स नहीं किया रहे क्यों सर? आई एम नॉट रिसीविंग कमेंट्स. क्लियर? कभी भी याद रखना वेलोसिटी वेक्टर को टू फाइंड द कोरियोलिस एक्सेलरेशन, या इधर देखो सर, टू फाइंड द कोरियोलिस एक्सेलरेशन, सपोज वेलोसिटी ऐसा है और ये ऐसा है, तो कैसा करेंगे? वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा घुमाओ. ओमेगा इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ 90 डिग्री. वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. इधर देखो ये पॉइंट एरो है ना, ये एरो ऊपर है, एरो ऊपर है, तो उसको ओमेगा का डायरेक्शन में ले लेना. ओमेगा के, ये देखो ओमेगा, ओमेगा इज क्लॉकवाइज, सो दिस विल बी कोरियोलिस एक्सेलरेशन. सिमिलरली देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कैसा लेना है सर? अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सिंपल सर, वेरी सिंपल. क्या प्रॉब्लम है सर? अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर को, ये देखो एरो पॉइंटिंग, वेलोसिटी वेक्टर को क्लॉकवाइज ही घुमाओ तो ये आएगा सर. अगर ये ऐसा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या करेंगे? वेलोसिटी को ले लो और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 90 डिग्री, तो ये डायरेक्शन आएगा. होप इट इज क्लियर सर. क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? टेक द वेलोसिटी वेक्टर and rotate in the direction of omega by 90 degree. ठीक है सर जी, ये करो. Come on, do it. Gear trains comprise of 4 spur gears. The driven gear G1, 2 idler gears, and the driving gear is G4. देखो, there is a driving gear G4 and 2 idler gears. This is driving and this is driven. Okay. द रेडियस ऑफ G1, G2, G3, इसका G1 का रेडियस क्या है सर? अरे आई एम नॉट ड्राइंग टू द क्या बोलते हैं स्केल, प्लीज माफी चाहता हूं सर. तो ये रेडियस ऑफ G1, G2, G3, G4, गेयर G1 का रेडियस है R, इसका रेडियस है R/2. एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ 3? R/3. एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ 4? ओ लकीली सूट हो रहा है सर, लकीली, लकीली सूट हुआ. अरे यार लकीली सूट हुआ, नो प्रॉब्लम. हाँ, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ऑफ, देखो ओमेगा 1/ओमेगा 4 पूछा है सर. ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60, तो 2π इज कांस्टेंट, तो ओमेगा का मतलब एन ऑल्सो ना, ओमेगा का मतलब एन ऑल्सो ना. देखो वेरी सिंपल सर. अब देखो ही इज आस्किंग n1/n4. देखो देखो n1/n4 can be written as n1/n2 into n2/n3 into n3/n4. Beautiful sir. 2 3 are in mesh, 1 2 are in mesh. देखो, you know at the point of contact the linear velocity should be same. तो क्या मैं इसको 1 2 को लिख सकता हूं? Pi d1 n1/60 is equal to pi d2 n2/60, because 1 and 2 are in contact. So at the point of contact, the linear velocity should be same, pi/60. So d1 n1 is d2 n2. So what is d1 n1 is equal to d2 n2? So therefore n1/n2 is equal to d2/d1. उल्टा होगा सर, n1/n2 is d2/d1. Very good sir. देखो, तो n1/n4 is equal to n1/n2 उल्टा d2/d3.
and n2 by n3, n2 by n3 ulta d3 by d2, and n3 by n4 ulta d4 by d3. d3 is gone d2. So n1 by n4 is equal to मित्रों n4 is equal to d4 by क्या है सर, d3 गया, तो d2 गया, d3 गया, d4 by d1, d उल्ट d4 by d1. What is fourth diameter sir? What is fourth diameter? 2r और रेडियस, अगर ये डायमीटर रेशियो है या रेडियस रेशियो है फर्क नहीं पड़ता, 2r 2 कैंसिल हो जाएगा. So d4, what is d4? 2r. And what is d1? d1 is r, तो ये कट जाएगा. So n1 by n4 is equal to 2 आएगा. Yes. Are they rotating in the same direction or opposite? अगर ये क्लॉकवाइज है, इनपुट क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज. So if this rotates in clockwise, this is rotating in anti-clockwise. So both are in the opposite direction. Whenever the idler gears are even, the input output rotate in opposite direction. So therefore, the gear ratio is 2 and they rotate in opposite direction. Is it clear, sir? हाँ जी सर. ये करो. Read the question first. टायर्ड हो गए सर? टायर्ड हो गए ना? ये क्वेश्चंस भी करवाऊंगा सर से, करवाना ही है. उल्टा है ये सर. एक सेकंड, ये करो देखते हैं. तो shall we stop? Again we'll see. थोड़ा थक गए ना, क्योंकि आई टुक मॉर्निंग क्लास लिए. देखो मॉर्निंग प्लस क्लास, 2 प्लस क्लासेस लिया सर मैं. आई टुक 2 प्लस क्लासेस. लेकिन बिफोर दैट ये देखो, ये वाला देखो सर, ये जर्नल बेरिंग है सर. द सोमरफील्ड नंबर इज गिवन बाय Zn by P into D by C होल स्क्वायर. दिस अगर ये D है तो इसको बोलते हैं डायमेट्रल क्लियरेंस. This can also be written as the Sommerfeld number is given by Zn by P into, अगर यहाँ पे रेडियस है तो यहाँ पे रेडियल क्लियरेंस होगा सर. ठीक है सर. तो क्या बोल रहा है सर, ध्यान से सुनिएगा सर. ए जर्नल बेरिंग R1 of radius R1, radial clearance C1 has a Sommerfeld number S1. Another bearing has, okay, all other parameters are same. What do you mean by all other parameters? यहाँ पे R CR change हो रहा है. Bearing pressure, bearing I mean viscosity of the lubricant and the speed all are same. तो क्या नहीं write this as he is asking S2 by S1 is equal to, ये तो same है सर. So फर्क क्या है सर, सिर्फ ये change हो रहा है. S2 is R2 by CR. देखो S2 is R2 by CR और CR2 का होल स्क्वायर बाई S1. ये तो कांस्टेंट है, निकल जाएगा सर. दिस इज सेम. सो R1 स्क्वायर बाई CR1 स्क्वायर. ठीक है सर. तो S2 by S1 is equal to, what is R2 sir? R2 is 2R1. And what is CR2? C2. And C2 is C1 by 2. C2 is C1 by 2. इसका भी होल स्क्वायर है सर. ठीक है सर. डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर बाई C1 स्क्वायर. ओके, कुछ कैंसिल हो जाएगा. C1 स्क्वायर गया, तो R1 स्क्वायर गया. वो क्या हो सकता है सर, 2 स्क्वायर इज, यहाँ पे 2 स्क्वायर है ना सर, ये 2 ऊपर जाएगा ना. अरे कहीं गड़बड़ किए, चलो नहीं किए, कोई बात नहीं सर. आई राइट दिस एज R2 स्क्वायर बाई C2 स्क्वायर इंटू C1 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर. खत्म सर. स्क्वायर. व्हाट इज R2? 2R1. 2R1 means 4R1 square. 2R1, 2R1 is 4R1 square by C2. What is C2? C1 by 2 का होल स्क्वायर.
इज इक्वल टू इंटू C1 स्क्वायर by R1 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर ऊपर जाएगा, गलत है सर 16, आई थिंक गलत है सर 16, R1 स्क्वायर का 7, इज इट 16 सर? 16 आ रहा है ना? आई थिंक वी आर गेटिंग 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट, 16 इज द राइट आंसर. ये करो. An old clutch is to transmit 100 Newton meter. The inner radius is, sorry, inner diameter. I'm sorry. The inner diameter is 100 and the outer diameter is 200. The force required for the engagement and the coefficient of friction is given as 1 by 3. Do you know that the torque transmitted is given by nu W into Ro plus Ri by 2 for uniform wear theory? ये सही है या गलत है सर? दिस इज फॉर यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी. याद है, अगर यूनिफॉर्म प्रेशर होता 2/3 म्यू डब्ल्यू आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब बाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. दिस इज फॉर यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी. ठीक है. टॉर्क, बट रेडियई आर गिवन इन एमएम, तो टॉर्क को भी कोई बात नहीं सर, न्यूटन एमएम में रखो. तो 100, देखो व्हाट इज टॉर्क, 100 न्यूटन मीटर. मीटर को मैं 1000 लिखूंगा सर, इज इक्वल टू म्यू इज 1/3 डब्ल्यू आर ओ प्लस आर आई बाई 2. एक सेकेंड, व्हाट इज आर ओ, 100. व्हाट इज आर आई, आर आई 50/2. Very good. Can you give me the value of W, sir, which is the actual force? Is it okay? What is the answer? Amma? एक सेकेंड. Okay. So how much is the value? So कितना आ रहा है सर? So it is 4 kilonewton ना? So we'll stop sir. आज के लिए बस इतना. ठीक है? चलो, bye bye. ठीक है? चलो फिर. सो प्लीज लीव द कमेंट, कैसा लगा और क्या उम्मीद है सर इसरो से पहले, और व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. प्लीज लीव कमेंट सेक्शन में सेशन के बाद. ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय. आई एम स्टॉपिंग.